पुरी जेल दुर्दांत अपराधी उपरे मरणातक आक्रमण हार्डकोर अपराधी पप्पू बराड़र तंटी काटी हत्या उद्यम अभियोग गुरुतर अवस्था पुरी डाक्तरखाना भर्ती गत सप्ताह गिरफ होइथिला पप्पू। बहुचर्चित जाजपुर पिहू निखोज घटना 2 वर्ष पर भी मिलनी कुनी झीर पत्ता पुलिस भी खोजुनी। राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन को भेटिले पिहूर मां सीबीआई तदंत दाबी कमिशन कहिले मुख्यमंत्री को जणाइबे। महिला एसआई स्वागतिका बेहेरा आत्महत्या नहीं तनाघना जिला पुलिस मुख्यालय को बदलिले गो उदयगिरी आईआईसी रेवती सबर सेपटे आईआईसी रेवती बहिष्कार सह गिरफ दाबी बीडीओ प्रतिश्रुति पर खोर्धा निराकारपुर पंचायत ऑफिस आगे उठिला मृतदेह हटिला धारणा। राजधानी अलिया को दारुढेंग बासिंदा रेड सिग्नाल 2 सप्ताह पर भी फिटुनी समाधान बाट निज जिद्रे अटल अछंती ग्रामवासी कहले कौनसी परिस्थिति रे डंपिंग यार्ड कराई दिए जीव नाही। आज पुणी बसिब बैठक समाधान नहीं नगर उन्नयन मंत्री आशावादी। तुमकार अंकिता अश्लील विदाय पुलिस उपस्थिति अंतिम संस्कार संपन्न अभियुक्त को फांसी देवाकू हिंदू संगठन दाबी राजरास्तार उत्तेजना 144 धारा जारी पेट्रोल ढाली निया लगाई देइथिला जलहाल। हेडलाइंस रो प्रायोजक हेले कल्पनार किछि अधिक जेएनडी जेम्स एंड ज्वेलरी। संपूर्ण खबर कस्तेबा पुणी It is 2 p.m. and time to start the meeting. I welcome all of you to the 45th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing because of the prevailing situation. This is in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting and vote. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. The requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding and register of contracts or arrangements in which directors are interested are available. This will remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce for the benefit of our new members, my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Srimati Neeta M. Ambani, Shri Nikhil R. Meswani, Shri Hital R. Meswani, Shri P.M.S. Prasad, and Shri P.K. Kapil. All directors of the company are present at this meeting. Shri Alok Agarwal, Shri V. Shrikant, Chief Financial Officers, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, and Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2022, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2022 has already been circulated to the members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2022 do not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. Accordingly, the reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013.
Now, I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste. A very warm good afternoon to each and every one of you. It gives me great pleasure to welcome you to the 45th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. Like the previous 2 years, this AGM is also hosted on a digital platform. The digital platform enables more shareholders from across the world to participate in the AGM. I miss the warmth and the bonhomie of our personal interactions. I sincerely hope that next year we will be able to switch to a hybrid mode which will combine the best of both physical and digital modes. Friends, 2 weeks ago, we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th anniversary of India's independence. A visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, in his most inspiring speech on August 15th, has given us a clear roadmap to make the next 25 years the most transformational in the history of our motherland. The Panch Pran, or the 5 imperatives he has articulated, will surely make India a developed nation by 2047. He has aptly described that the next 25 years is India's Amrit Kal, the era of elixir. Within the next one generation, India is set to achieve more than all the post-independent generations have collectively achieved so far. And Reliance is set to make a far greater contribution to India's prosperity and progress than we have done so far. Friends, the world has almost fully overcome the COVID pandemic. This is heartening. However, there is uncertainty again due to heightened geopolitical tensions and global risks. There is severe economic stress in many parts of the world. Rising fuel, food, and fertilizer prices are impacting everyone in the world. High inflation and supply disruptions are triggering recessions. Amidst this global unpredictability, India stands tall as a beacon of growth and stability. The government's skillful management of the pandemic and the pragmatic approach in dealing with the ensuing economic challenges have helped India emerge stronger than before, wiser than before, and more resilient than before. I would like to congratulate our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, for his far-sighted leadership, and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for her exemplary stewardship in navigating the Indian economy through a period of unprecedented challenges. The most profound lesson that the world has learned from the pandemic is, greater the adversity, greater still is humanity's inner strength to conquer it, provided we care for each other. Friends, this prompts me to reiterate the core philosophy of Reliance, the philosophy of we care. We care for our employees and their families. We care for all our stakeholders, customers, shareholders, and partners. We care for India and all 1.4 billion Indians. We care for the planet and its people. It is the philosophy of doing good to do well. It is the philosophy to create greater value for others first. The ever-expanding circle of care enhances respect for Reliance globally and ensures its sustainable growth year after year, decade after decade, and generation after generation. Dear friends, let me now speak about the business and financial performance of your company in the year 2022. Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. Reliance's annual consolidated EBITDA crossed the crucial milestone of 1.25 lakh crores. And in true We Care spirit, Reliance Foundation continued to benefit millions of people across the country. Reliance not only set
higher benchmarks of serving the community, but also created business value and societal value on an unparalleled scale. Reliance's exports grew a massive 75% to cross 250,000 crores. We accounted for nearly 8.4% of India's merchandise exports in the year, up from 6.8% last year. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. Friends, let me start with our digital services business, Jio. Over the past year, Jio has further consolidated its position as India's #1 digital services provider. Today, we have 421 million mobile broadband subscribers on our 4G network, and they consume, on average, nearly 20 gigabits of broadband data every month, which is nearly double their consumption from the year before. Inspired by a dynamic Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji's Digital India initiative, our country has seen the emergence and scale-up of multiple world-class national platforms which have brought enormous benefits and ease of living to ordinary citizens, like Aadhaar, a common national identity for 1.3 billion Indians, like Jan Dhan, a self-service bank account that has brought financial inclusion to over 460 million unbanked Indians, especially women, like RuPay, an indigenous payment card network with over 630 million cardholders, and like UPI, one of the most accessible digital payment system with a monthly volume of over 6 billion transactions, like Ayushman Bharat, providing health coverage to over 500 million Indians. Another example is our Prime Minister's path-breaking Startup India initiative, under which India has launched over 73,000 new startups in the last 6 years. They have collectively attracted nearly $63 billion of investment and contributed to the creation of lakhs of new employment opportunities. And we have the example of how India has used digital connectivity and digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. With both humility and pride, I would like to state that all these phenomenal accomplishments became possible because Jio built a world-class 4G digital infrastructure at the right time with sufficient capacity and offered it most affordably to every Indian to take India to global leadership. Let me now talk about Jio's fixed line network. Jio's high quality, redundant and always available fiber optic network is the information backbone that carries data traffic from every corner of India and connects it to the global internet. Today, Jio's pan-India fiber optic network is more than 11 lakh route kilometers in length, enough to go around the planet Earth more than 27 times. Over the past year, we also saw acceleration in the adoption of Jio Fiber, with 2 out of every 3 new customers choosing Jio Fiber. Jio Fiber is now the #1 FTTX service provider in India with over 7 million connected premises, a feat achieved in less than 2 years despite COVID lockdowns. But despite strong growth, India still lags behind the rest of the world significantly in fixed broadband services. With about 20 million connections, India is ranked a lowly 138th in the world in fixed broadband adoption. Unlike in leading nations, the vast majority of our homes, offices, and businesses
have been deprived of the power of fixed broadband and ubiquitous indoor Wi-Fi, and consequently the power of modern digital tools. This has to change, and change fast. Jio will change this. We will enable India to be among the top 10 globally in fixed broadband adoption. Friends, today I want to announce the next leap forward that Jio is creating in digital connectivity, especially in fixed broadband, and that is Jio 5G services. Using 5G technology, we can now deliver breakthrough increases in broadband speed, network capacity, and number of connected users while dramatically reducing latency. With Jio 5G, we can achieve three simultaneous objectives. One, we can build on the success of Jio 4G by introducing an even more advanced version of our mobile broadband service. Two, we can accelerate the rollout of high quality, highly affordable fixed broadband services to hundreds of millions of locations in a very short period of time. And three, we can use this vastly expanded broadband availability to further stimulate the adoption of connected, intelligent solutions across all walks of life. Specifically, we can connect over 100 million homes with unparalleled digital experiences and smart home solutions. We can leapfrog tens of millions of small merchants and small businesses by empowering them with cutting-edge plug-and-play solutions delivered from the cloud. We can provide lakhs of medium businesses with the same digital capabilities that were historically available only to larger companies. We can accelerate the digital transformation of tens of thousands of our large enterprises and make them globally competitive. We can launch billions of smart sensors with connected intelligence that can power the Internet of Things and the fourth industrial revolution. With Jio 5G, we can connect everyone, every place, and everything with the highest quality and the most affordable services. In addition to meeting India's needs, we are confident of offering digital solutions to world markets. At Jio, we are energized by this vision. We are committed to make India the largest data-powered economy in the world, even ahead of China and the United States. Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. With standalone 5G, Jio can deliver new and powerful services like low latency, massive machine-to-machine communication, 5G voice, edge computing, and network slicing. Jio 5G will be true 5G in every sense, and I believe that India deserves nothing less than true 5G. And through the recent auction conducted by the Department of Telecommunications, we have also acquired the largest and the most appropriate mix of wireless spectrum for 5G. And this gives Jio 5G a distinct competitive advantage. In addition to the 3,500 megahertz mid-band spectrum that is globally earmarked for 5G and the 26 gigahertz millimeter wave band for ultra-high capacity, only Jio has the 700 megahertz low-band spectrum that is so very essential for deep indoor coverage. And we are able to seamlessly combine these frequencies into a single powerful data highway using an advanced technology called carrier aggregation. This threefold advantage
of standalone 5G architecture, largest and best mix of spectrum, and carrier aggregation means that Jio 5G will be able to offer an unparalleled combination of coverage, capacity, quality, and affordability. We are working very closely with all leading global smartphone OEMs, and we have their commitment that they will support Jio's true 5G in India. I firmly believe that digital freedom is the birthright of every Indian. Therefore, 5G cannot remain an exclusive service available only to the privileged few or only to those in our largest cities. To build our pan-India true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. We will use our combined wireless and wireline assets to blanket the 3.3 million square kilometers of India's landmass with fiber quality broadband, connecting even those parts of the country where thus far satellite technology was considered the only option for connectivity. Friends, we are able to pursue our disruptive ambitions because of the unique technology, research and development capabilities we have developed in Jio. As I mentioned in our earlier meetings, we have indigenously developed an end-to-end 5G stack, which is fully cloud-native, software-defined, digitally managed, with support of even advanced features like quantum security. This is 100% developed by our own over 2,000 young Jio engineers working tirelessly for the past 3 years. We have already deployed this made in India 5G stack in our network with sufficient capacity to serve hundreds of millions of users from day one. Furthermore, Jio 5G is uniquely positioned to offer private 5G solutions for Indian enterprises at owners' economics. Friends, let me now invite Akash and Kiran on stage, who will talk about some of the exciting experiences that will be possible with Jio 5G. Good afternoon, everyone. I am Akash Ambani. And I am Kiran. As we gear up to roll out Jio True 5G across India, let's take a look at a few interesting possibilities. Let's start with mobile broadband. Only Jio True 5G has the threefold advantage of standalone 5G architecture, broader spectrum, and advanced carrier aggregation technologies. Jio True 5G truly delivers breakthrough increases in broadband speed and dramatically lower latency. Let's see this in action with a speed test on Jio True 5G. Wow! We don't get 1 Gbps even on many of the fixed broadband networks in our country. Since 2016, Jio 4G has unleashed a tsunami of digital applications and rich digital content across India. Today, over 80% of the data consumed on Jio 4G is in video format. With Jio True 5G, mobile broadband will shift gears yet again, and we can enjoy even more video and immersive content. That too, consistently in ultra-high definition quality, no matter where you are. This also means that you will get a dramatically superior experience when you use your favorite video streaming and video calling mobile applications. 5G will not only enhance all your current mobile experiences, but will also create new and first-time experiences that will only be possible with 5G. For example, for the first time, the ultra-low latency of Jio True 5G will enable real-time applications like cloud gaming, even while you are on the move. And in the near future, it will also enable
immersive experiences like augmented reality with Jio Glass and devices from many other partners. An even more exciting possibility of Jio 5G is ultra-high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra-high speed internet using true 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra-high speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, बहु प्रतीक्षार अंत माटी मिसला नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर अपराह्न 2:30 रे मात्र 7 सेकेंड रे ध्वंस होगला दैत्य अट्टालिका 3700 किलोमीटर विस्फोरक उड़ाई दिगला पूरा अट्टालिका ब्लास्ट हेबा परे 10 रु 15 मिनिट जाए धुआंमय परिवेश होइतला संपृक्त अंचल 200 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उड़ीथिला धूली धूलीमय हो जाइतला स्थानीय घरद्वार पार्क एवं एक्सप्रेस वे विस्फोरण बेले कंक्रीट रु जो धूली उड़िला ताहा द्वारा स्थानीय अंचल में वायु प्रदूषण होइछि 30 मिनिट पर्यंत अनुभूत होइतला कंपन बा भाइब्रेशन ब्लास्ट साइट ठारू 1 किलोमीटर पर्यंत पड़ितला प्रभाव 3 घंटा पर्यंत आखपाख अंचलवासी निश्वास नेबारे समस्या होइतिबा कुआ जाउछि। राष्ट्रीय कांग्रेस पाइब नुआ अध्यक्ष अक्टोबर 17 रे हेबो एआईसीसी अध्यक्ष पई निर्वाचन अक्टोबर 19 रे हेबो भोट गणति रविवार बसिथिबा कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी सीडब्ल्यूसी बैठक रे एने निष्पत्ति होइछि निर्वाचन पई सेप्टेम्बर 24 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य रे नामांकन समय धार्य होइछि अक्टोबर 1 रे हेबो जांच अक्टोबर 8 रे हेबो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार सेहि बळी सीडब्ल्यूसी बैठक रे महंगाई विरोध रे हल्लाबोल और भारत जोड़ो यात्रा प्रसंग रे आलोचना होइछि। टिकटॉक स्टार तथा बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाटଙ୍କ मृत्यु मामला रे होई पारे सीबीआई तदंत मामला संवेदनशील थिबारु सीबीआई तदंत पई सुपारिश करि पारंती गोवा सरकार एने सूचना देछन्ती गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से कहिसन्ती एही प्रसंग रे हरियाणा मुख्यमंत्रीଙ୍କ सह आलोचना होईछि आवश्यक पड़िले मामलार सीबीआई तदंत करा जिवो एपटे मामला रे आउ जणे ड्रग्स व्यवसायी को गिरफ करछि गोवा पुलिस एजाबत 5 जन को गिरफ करी छानबीन जारी रखिछि पुलिस होटेल मालिक और 2 ड्रग्स व्यवसायी को 5 दिनिया रिमांड रे नेछि पुलिस। घू उद्योगरी एसआई आत्महत्या मामला रे बदलिबे घू उद्योगरी आईआईसी रेवती सबर जिला मुख्य कार्यालय को बदलिबे रेवती एने प्रतिश्रुति देइछन्ती कंधमाल एसपी विनीत अग्रवाल आईआईसी को बदली दाबी रे धारणा रे बसितिले स्वागतिकांक परिवार एसपी को प्रतिश्रुति परे धारणा रो हटिछन्ती परिवार तेबे निष्पत्ति उपरे परिवार लोके संतुष्ट नथिबा कहिछन्ती मृत्युर 48 घंटा मध्य पोस्टमार्टम हेबा जरूरी थिबारु वर्तमान धारणा रो हटिथिबा परिवार लोके कहिछन्ती दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान निया नगले आगामी दिन में पुणी थे धारणा बसिबे बोली परिवार लोके कहिछन्ती सेपटे परिवार लोकंक अभियोग आधार रे तदंत करा जाउछि
तदंत भार हेडक्वार्टर जड़े सीनियर डीएसपी को दि जाइतिबा एसपी विनीत अग्रवाल कहते। दुर्घटना नेला 5 जीवन। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर थाना 53 नंबर जातीय राजपथर पथरकंब छक निकटରେ घटिଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅଟୋରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଲିଭି ଯାଇଛି 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ହଟିଥିଲେ। ସେପଟେ of hundreds of millions of our citizens. For example, take agriculture. Jio 5G connected drones can be used for spraying organic fertilizer on crops across the large tracts of farmland in a timely manner, thereby improving yield and reducing cost for our farmers. Or take healthcare. Ambulances equipped with tele-ICUs can reach patients faster, and doctors can use 5G connectivity to remotely monitor a patient's vitals in real time and to deliver critical care even while patients are in transit to an emergency room. This can result in millions of lives saved. Or take education. Providing quality education to the 250 million children of our country is a key development goal for India. Through Jio 5G, we can create the digital infrastructure for delivering high-quality educational content to every student and every classroom across our nation. Padega India, to Badega India. Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. Very soon, we are opening a Jio 5G Experience Center in Mumbai for the public. We will showcase these and many more exciting use cases and possibilities of Jio 5G there for everyone to experience firsthand, even before they are launched in the market. We invite one and all to visit us and experience the magic of Jio True 5G. With that, let us now invite our chairman back on stage. Thanks, Akash and Kiran. Friends, we are also privileged to have some of the world's leading technology players as our strong partners in our Made in India 5G collaboration. We are excited to work with Meta in realizing our vision of bringing the benefits of immersive technology to everyone. We believe India's vibrant digital ecosystem can play a critical role in shaping the metaverse and bring new possibilities in education, healthcare, and commerce 4.0. We are working with Google to develop ultra-affordable 5G smartphones for India and to leverage the advanced capabilities of Google Cloud to offer Jio's private 5G stack and other 5G-enabled solutions to both domestic and global users at scale. We are partnering with Microsoft to expand the Azure ecosystem in India and to develop a vibrant ecosystem of cloud-enabled business applications and solutions, especially for small and medium businesses. We are working with Intel on technologies used in Jio's cloud-scale data centers and 5G edge locations and in infrastructure for cutting-edge applications like artificial intelligence. And we have well-established relations with leading global network technology providers like Ericsson, Nokia, Samsung, and Cisco. And today, I want to announce one more exciting partnership with Qualcomm, who is not only a global semiconductor and communications technology major, but also one of our valued investors in Jio platforms. To share a few words on this partnership, I have with me today my dear friend and the CEO of Qualcomm, Mr. Cristiano Amon. Thank you, Mukesh. I'm privileged to be speaking to all of you. The 5G spectrum auctions are behind us, and Reliance Jio is well positioned to drive digital transformation across all aspects of life in India.
utilizing your excellent position in the 700 megahertz, 3500 megahertz, and 26 gigahertz spectrum. Jio plans for reaching 1,000 cities are ambitious, but I'm confident in its proven ability to execute. A great example was the paradigm-shifting 4G rollout in 2016. We worked together to deliver innovation at scale, including advanced LTE data services for devices used by consumers and micro enterprises across India. The results have been incredible. According to the GSMA, there has been a significant improvement in the urban-rural connectivity gap, and data consumption has been increasing steadily, making India one of the highest data-consuming markets globally. With 5G's power to extend far beyond the smartphone, Jio is poised to take the success to the next level. When virtually every device can be reliably connected to the cloud, significant opportunities are unlocked, not only for Jio, but also for India consumers, industry and enterprises, and even strategic government missions. To fully realize 5G's potential, Jio has spectrum bands that provide a well-balanced mix of capacity and coverage. Millimeter wave will be a critical component of Jio's high-performance 5G network. With its extreme capacity, multi-gigabit throughput, and ultra-low latency, it will enable fiber-like broadband through fixed wireless access, eliminating the need for fiber in inaccessible regions. When I met Honorable Prime Minister Modi last year, he spoke about accelerating advanced communication technologies for the socio-economic advancement of all Indians. Jio and Qualcomm are working to develop the right solutions to help achieve this goal. We're also excited to be working together on cloud-native, scalable, and flexible 5G infrastructure in both millimeter wave and sub-6 gigahertz to develop an ecosystem that can extend beyond India. Additionally, I was happy to learn about Reliance Jio's broader efforts in drones, robotics, automotive, Industry 4.0, and private networks. Reliance is one of the few companies that has the scale to take the solutions across industries and geographies. Our strategic relationship and complementary strengths, spanning sectors and industry verticals, will enable us to tackle this vast opportunity. As India celebrates 75 years of independence, with Jio, we're committed to developing the digital infrastructure that enables the success of citizens and business and achieves the new India envisioned by the Prime Minister. Paraphrasing Mukesh, 5G rollout is finally a top priority. Congratulations to the entire Reliance team and best wishes for another great year ahead. Thank you, Cristiano. I am confident that the solutions developed by Qualcomm and Jio, once proven in India, can be taken to the rest of the world. Jio 4G, Jio Fiber, and now Jio 5G are uniquely positioned to deliver the best quality, highest value digital connectivity solutions for our country. Likewise, Jio Platforms, our digital services arm, has been quietly building capabilities that span the entire digital solutions ecosystem. And we are deepening our expertise by attracting the best global talent across all key digital technologies like smart devices, cloud and edge computing, big data, artificial intelligence, IoT, robotics, blockchain, and augmented reality. These capabilities are not just powering the breakthrough scaling of all our own businesses, but we are well poised to spearhead India's transformation into a leading digital society. India can lead the world with digital solutions that solve humanity's biggest problems today, like education, healthcare, agriculture, governance, and sustainable development.
I will have a lot more to share about these opportunities next year. Our media business achieved its highest growth last year on the back of strong engagement, resulting in record subscriptions and advertising revenues. Our national channels CNN News 18, CNBC TV 18, and News 18 India are consistently ranked number 1. Money Control is among the world's most popular subscription products. Our news brands are innovating with novel storytelling methods across platforms, building deeper relationship with audiences wherever they are and whatever device they use. Our entertainment arm, Viacom 18, consolidated its leadership position with a high decibel entry into sports, bagging the digital rights of IPL for 5 years. Along with key sporting rights in football, badminton, basketball, tennis, and now cricket, Viacom 18 is also aggressively investing in movie rights and original content for OTT. In news, entertainment, and sports, digital is a core and fast-growing theme as we prepare to embrace the 5G revolution. Our partnership with Bodhi Tree, James Murdoch, Uday Shankar, and Paramount Global will help Viacom 18 with additional talent bandwidth and enable us to create a world-class media and entertainment business. Dear shareholders, let me congratulate the entire leadership team at retail on achieving a proud record of rupees 2 lakh crore turnover and EBITDA of 12,000 crores. Today, Reliance Retail is among the top 10 retailers in Asia. Reliance Retail's purpose is to serve millions of customers every day by providing them with unlimited choice, outstanding value proposition, superior quality, and unmatched shopping and delivery experience through our physical stores, merchant partner stores, digital, and omni-commerce platforms. Our business model also has Panch Pran, 5 imperatives. First, focus on enriching customer experience across digital and physical at each touch point using technology. Second, operationalizing and growing multiple channels to increase our reach to serve our customers across India, especially the underserved rural India. In this endeavor, our strategy is to integrate with millions of small merchants and provide them a platform to prosper. The aim is to bring them to become an integral part of the widest distribution portfolio across the country so that they can provide the same choices to their customers that are available in big cities. Third, deepen the categories that we operate in so that we can offer maximum choice on a continuous basis to our customers across all strata of the community. We will do this by investing in design, value, service, and experience to empower customers and make our customer experience better. Fourth, expand our product portfolio. We will partner and integrate with all brands, small producers, and MSMEs so that we can source from the widest range of quality products for our customers. We extend our product and design capability to MSMEs so that they can offer products of the highest quality across different price points and enhance the choice to customers. And fifth, strengthen our logistics and supply chain capabilities, establish a strong technology-enabled supply chain capable of moving products across geographies in India in the most efficient manner, eliminating inefficiencies and waste, pass on the benefits to our customer. I now invite Isha as the leader for the retail business to provide an update on the retail business. Thank you, Chairman. It is my privilege to give you an update on the progress that Reliance Retail made last year. We served over 200 million registered customers, equal to the entire population of the UK, France, and Italy at Reliance Retail's physical stores and digital platforms. We welcomed 520 million walk-ins to our stores, a growth rate of 18% year-on-year.
and 4.5 billion visits to our digital platforms, up by 2.3 times year on year. Our digital commerce platforms continued its growth with average daily orders of nearly 6 lakh orders being delivered every day, an increase of 2.5 times over last year. Geomart, delivering in over 260 towns, was rated as India's #1 trusted brand for online groceries. Geomart works on a hyperlocal delivery model and is India's largest deployment of an omni-channel capability. We opened over 2,500 stores in the year, and that takes our store count to over 15,000 stores and an operational area of 42 million square feet. We built an extensive supply chain network with modular design and best-in-class automation. We doubled our warehousing and fulfillment space to 670 million cubic feet, linking supply locations with demand centers across the country. We generated employment for more than 1,50,000 people during the year, taking our total employee base to over 3,60,000. We invested in acquisitions and partnerships during the year to enter new categories, strengthen our service capabilities, and extend our reach to new markets. We continue expanding our reach to more customers through the addition of store networks and merchant partners. We have accelerated our new commerce initiative, which is powered by the true spirit of inclusion. Since our launch 2 years ago, we have grown our merchant partner base to over 20 lakh partners. We add about 150,000 partners a month and are on course to partner with 1 crore merchants as we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. Our grocery business is the largest of its kind in the country, serving the daily needs of our customers through a network of nearly 2,500 stores, and also Geomart and Milk Basket as our digital commerce platforms. We launched Fresh Pick, a gourmet format, and rolled out 7-Eleven for on-the-go customers. During the year, we strengthened our own brand's presence by launching several new products across the categories of staples, home, personal care, and general merchandise. Further, we launched our WhatsApp Geomart partnership, which I would now like to demo to you. Let me now open my WhatsApp. To start your shopping experience, you can simply say hi to the Geomart SmartBot in WhatsApp, and Geomart will send you a link to get you started. I already have this link, so I'm going to click on it to get started. Immediately, we're transported from the usual chat interface of WhatsApp to a more visually engaging shopping experience. From here, you can browse the entire Geomart catalog, which is neatly organized into categories and subcategories. I want to buy something new. Let me add a dozen bananas to my shopping cart. An easier way to find the products that you want is to use the search option. Let me search for something. Aha, exactly what I wanted. Natural yogurt. Let me add this also to my cart. Now, let's look at the cart. You can see the dozen bananas and the yogurt. Let me now confirm my order. Since I'm a repeat customer, Geomart already knows my usual delivery address and I can simply confirm. And now let me choose my payment method. I want to use WhatsApp Pay, but you can also use cash on delivery and other methods. Before I pay, I can once again verify my order. And since WhatsApp Pay is based on UPI, let me now enter my UPI security PIN. That's it. My order is now placed. I've also got my confirmation message, and as you can see, I was able to complete my entire shopping journey within WhatsApp itself, and that too within seconds. Of course, I will get updates on the order status until delivery. It was as simple as that. Dear share owners, our consumer electronics business has the widest network of over 8,700 stores across 7,000 towns. It is supported by over 200 dedicated rescue service centers, India's largest product and brand agnostic support and service ecosystem. Our digital commerce platforms of Reliance Digital.in and Geomart provide a comprehensive omni-channel network
enabling us to deliver 93% of our online orders from our stores within 6 hours. We rolled out our Geomart digital initiative during the year. The platform enables small electronics merchants to sell the entire product portfolio of Reliance Retail on an assisted selling model, helping them deliver superior customer experience and growing their own income. We strengthened our own brands business through launching 600 new SKUs during the past year. These were across the categories of TVs, home, and electrical appliances. Our fashion and lifestyle business has the widest physical reach with nearly 4,000 stores in over 1,000 towns. Ajio, our integrated omni-channel platform, is one of the most loved fashion destinations with 80% of purchases from repeat customers. Ajio Business, our new commerce initiative, works with merchant partners across 3,500 towns, giving them access to a collection of over 8,000 regional and national brands in addition to a wide portfolio of our own brands. Last year, we sold over 43 crore garments, which is enough to clothe the entire population of the US and Canada. Last year, we further strengthened our product portfolio by entering into categories like lingerie, saris, and home furnishing, and have quickly scaled to establish significant positions in each of them. Our strong design and sourcing ecosystem has enabled us to grow our own brands across apparel and footwear. Our own brands contribute to over 65% of overall revenues. Reliance Brands continues its journey of expanding its luxury and premium brands portfolio by bringing more global brands to Indian customers. We have acquired and partnered with some of India's top names in couture and fashion through a curation-led approach to better serve the luxury customer in India and internationally. A year ago, we made an entry into pharmacy retail with the acquisition of NetMeds. During the year, the business launched new commerce operations through NetMeds Wholesale and onboarded merchants across 1,900 towns. I am excited to announce that this year, we will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high-quality products at affordable pricing. As part of our commitment to India's rich culture and heritage, we will soon start marketing quality goods produced by tribals and other marginalized communities across India. This will not only provide these communities with gainful opportunities for employment and entrepreneurship, but also help preserve the incredibly rich talent, skill sets, and knowledge base of our traditional Indian artisans, especially women. Finally, on behalf of the entire retail team, I would like to end by reiterating our commitment to exponentially grow this business in the years to come. Thank you. Thank you, Isha. Dear shareholders, I am confident that Reliance Retail and its leadership team, led by Isha, would deliver exponential growth and become the largest segment within the group. I wish them all the very best. Dear shareholders, let me congratulate our oil and gas team for a spectacular turnaround, with production jumping 9 times and revenues crossing $1 billion. With 19 million standard cubic meters per day of production in ultra-deep water fields, KGD6 is contributing 20% of India's domestic gas production. With the MJ field commissioning, by end 2022, KGD6 would contribute nearly 30% of India's gas production and help meet India's growing demand, leading to an import saving of nearly $9 billion per year. This is a major source of clean and affordable energy for India, particularly in times of a significant global energy crisis. Dear shareholders, our O2C business crossed rupees 5 lakh crore in annual revenues. The EBITDA of our O2C business crossed rupees 50,000 crores. We are committed to maximize oil to chemicals integration and convert
our advantageous feedstock streams to value chemicals and materials. I am pleased to share that over the next 5 years, we will invest rupees 75,000 crores and expand capacities in existing and new value chains. First, in the polyester value chain, we will build one of the world's largest single train PTA plant of 3 million tons per annum capacity at Dahej. We will also invest in 1 million ton a year PET plant at Dahej. Both PTA and PET will be targeted for completion by 2026. We will also reinvest in polyester filament yarn and polyester staple fiber. Polyester expansion with a capacity of over 1 million tons will be completed in phases by 2026. Second, in the vinyl chain, we will more than triple our existing capacity by adding world-scale plants at Dahej and Jamnagar in India and the UAE. We target to complete 1.5 million tons of feedstock integrated PVC expansion at Dahej and Jamnagar in phases by 2026. We will also add capacities to make EDC and PVC at Ruwais, UAE as a part of the Taziz chemical zone. This will be in partnership with ADNOC and ADQ and targeted at fulfilling domestic demand of the region. With these expansions, Reliance will be amongst the top 5 producers of PVC globally. Third, consistent with our vision for new materials, we will build in phases India's first and one of the world's largest carbon fiber plants at Hazira with a capacity of 20,000 metric tons based on acrylonitrile feedstock. We will commence acrylonitrile production next year and aim to complete the first phase of the carbon fiber plant during 2025. We will further integrate our composite business with carbon fiber to produce carbon fiber composites. Besides other applications, carbon fiber composites are also used to meet the rapidly growing lightweighting requirements for mobility and renewable energy. Thus, carbon fiber promises to be a multi-decade growth engine for O2C. Friends, Reliance has championed the cause of sustainability through circular economy and is a leader in India's recycling of polyester and plastics. We will strengthen our leadership position in PET recycling by more than doubling our bottle recycling capacity to 5 billion bottles a year. I am further pleased to share that our scientists have also developed pathways to produce biodegradable and compostable plastics to completely replace single-use plastics. Dear friends, Reliance has commenced its journey to become net carbon zero with a set of concrete actions. Let me present one such initiative being pursued towards replacing fossil fuels with renewable alternatives. We have extensively started consuming biomass as a fuel to produce green energy at scale. I am pleased to share that within a span of just 1 year, we have replaced almost 5% of energy consumption at Dahej and Hazira sites by green power and green steam. Within 1 year, the renewable energy consumption at Reliance jumped by 352%. I feel confident that such initiatives, coupled with transition to renewable power for our O2C assets, will accelerate our journey to become बहु प्रतीक्षार अंत माटी मिसला नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर अपराह्न 2:30 मिनिट्रे मात्र 7 सेकेंड्रे ध्वंस होगला दैत्य अट्टालिका 3700 किलोमीटर विस्फोरक उड़ाई दिगला पूरा अट्टालिका ब्लास्ट होगा पर 10 रु 15 मिनिट जाए धुआंमय परिवेश होता संपृक्त अंचल 200 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उड़ीला धूली धूलीमय हो जाता स्थानीय घरद्वार पार्क एवं एक्सप्रेस वे विस्फोरण बेले कंक्रीट जो धूली उड़िला ताहा द्वारा स्थानीय अंचल में वायु प्रदूषण होईछि 30 मिनिट पर्यंत अनुभूत होइतला कंपन बा भाइब्रेशन ब्लास्ट साइट ठारू 1 किलोमीटर पर्यंत पड़ितला प्रभाव
3 घंटा पर्यंत आखपाख अंचलवासी निश्वास नेबारे समस्या होइतिबा कुआ जाउछि। राष्ट्रीय कांग्रेस पाइब नुआ अध्यक्ष। अक्टोबर 17 रे हेबो एआईसीसी अध्यक्ष पई निर्वाचन। अक्टोबर 19 रे हेबो भोट गणति। रविवार बसितिबा कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी सीडब्ल्यूसी बैठक रे एने निष्पत्ति होइछि। निर्वाचन पई सेप्टेम्बर 24 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य रे नामांकन समय धार्य होइछि। अक्टोबर 1 रे हेबो $5 trillion per year globally. This also offers unprecedented opportunities for multi-decade growth. The sheer magnitude of this responsibility has made our new energy business far more ambitious, far more transformational, and far more global in scope than anything that Reliance has ever done before. Friends, I am happy to share that we have made rapid progress. We have laid a strong foundation to realize our vision. We are well on our way to create a manufacturing ecosystem which will be fully integrated with secure and self-sufficient supply chains. It will be backed by world-class talent and capabilities built on the pillars of technological innovation through strategic partnerships. It will deliver modular, at scale, affordable, and the most modern green energy manufacturing business based in India for India and the world. These capabilities will enable us to replicate our success with our partners globally. Friends, last year I had announced setting up of the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex in Jamnagar. The work done so far has reaffirmed my conviction in solar energy and has provided further impetus to our investment thesis to establish 4 gigafactories. First, for photovoltaic panels. Second, for energy storage. Third, for green hydrogen. And fourth, for the fuel cell system. Today, I would like to announce our new gigafactory for power electronics. One of the key components linking the entire value chain of green energy is affordable and reliable power electronics. We are building significant capabilities in design and manufacture of power electronics and software systems, integrating with our capabilities of telecommunications, cloud computing, and IoT platforms. We will build this through partnerships with leading global players to provide most affordable solutions, meeting global standards of performance, safety, and reliability. In addition to solar energy, we are also actively progressing on bioenergy, offshore wind, and other non-conventional forms of renewable energy, and will continue to expand our manufacturing ecosystem. Let me further elaborate on progress made in building our manufacturing ecosystem. We have invested and partnered with leading companies globally in solar, battery, and electrolyzers. With each of these partnerships, we gained access to unique technology. खबर को आसिबा राजधानी अभावनीय घटना मृत शिशु को अखावस्था नेउथिला बापा देह खराब थिबारु हॉस्पिटल रे ताकु भर्ती करथिले डाक्टर मृत घोषणा करिबा परे अखावस्था नेउथिया बेले लोक माने धरिछंती शिशु कन्यार बयस हेउछि 8 मास कैपिटल हॉस्पिटल रे डाक्टर शिशु को मृत घोषणा करथिले परे शिशु कन्या को नै एक बैग रे जाउथुआ बेले खंडगिरी छकरे किछि लोक माडो मारिथिले परे खंडगिरी थाना पुलिस हस्तक्षेप करी मृत शिशु कन्या को सत्यनगर श्मशान को पठाई दैछि पिला रात्र खाइला पिला खेलला बुल्ला सब होला सकाळे भी खेलला बुल्ला खाइयो देलो खाइला 9:30 पूरा कोन हैला माने नाकरो ब्लड काढला तापरे नाळ जा ये हैला तापरे एडी आनलो 6 नंबर आनलो देखलना डॉक्टर कहला धरी आसले ऑटो धरी आसलो धरी आसले बेले जोमर सरियला हाँ से गिरफ खाली खाली तो बाड़े मो मत तो बाड़े मो पुओ तो बाड़े आगे मु तो सब थाना रे मु गली आगे मत थाना खाली नहीं जो मत थाना नहीं जो मु थाना वाला जा कह सबुदा मोर सबुदा अप्रूव बैग रे पिल्ला को धरी आस्तुले कोडे नई तर रहिथा
नई तर गोड़े पोती देबे धरी जिबे से कथा भाबिकिरी धरी आस्तिले खंडेगिरी छकर केती नको धरिकिरी पुओ को मो स्वामी की बाड़ेले कहीं बैग कौन पिला संकिच पीरी मारी देचु ताकू माँ को डाकिली प्रमाण देली कहला मेडिकल सर्टिफिकेट आण तार जन्म सर्टिफिकेट आण सब आण पुलिस इनफॉर्म करके मो स्वामी की आंठाइले मु कहली आंठाआंटी करन मो पूर्व धरी आउछि तमे खंडेगिरी थाना जी मु भी खंडेगिरी थाना जी मु साक्षी देबी मु सब एफआईआर देली आ जदी चाहिबे जति ताके जदी स्वामी स्त्री जदी जानि पान सेइडे जति अछति ताके दी पचार लेबेले साक्षी देई पारिबे। ये अभावनीय घटनार सीधासलख दृश्य आपण मान देखुचंती एक्सक्लूसिव विजुअल मृत शिशु को जतबेले अखा बस्तारे नेउथिले बापा एवं देह खराब थिबारु पिलाटी को हॉस्पिटल से माने भर्ती करथिले शिशुर बयस मात्र 8 मास किंतु सेठारे डाक्टर ताको मृत घोषणा करथिले एवं पिला को जतबेले से बैग रे नै कि जाउछंती सेही समय रे ही अखाबस्तार नेउथिया बेले ही खंडगिरी छकरे किछि लोक शिशुर बापा को माड़ मारिछंती पर खंडगिरी थाना हस्तक्षेप करी मृत शिशु कन्या को सत्यनगर श्मशान को पठाई देछि किंतु अभियोग आपण माने सीधा सड़क शुणुथिले बापा जे अछंती पिलारो एवं मांकर मध्ये अभियोग रहउछि जे माने एम्ति आईन को हाथ को नैछंती जे माने ताको माड़ मारिछंती सेमानक विरुद्ध रे आईनगत कार्यानुष्ठान हेउ डाक्टर मृत घोषणा करिबा परे अखा बस्तारे नेउथिया बेले ताको खंडगिरी छकरे लोक धरिथिले। एक्सक्लूसिव विजुअल आपण माने देखुछंती शिशु कन्यार बयस हेउछि 8 मास कैपिटल हॉस्पिटल रे जेतेबेले पिला को चिकित्सा पई निया जाइथिला सेठारे डाक्टर शिशु को मृत घोषणा करथिले पर शिशु कन्या को नै गोटे बैग रे जाउथिया बेले खंडगिरी छकरे किछि लोक शिशुर बापा को माड़ मारिथिले एने को अधिक आलोचना करबा करेस्पोंडेंट दीपक सामल अछते मस्त फोन लाइन रे। दीपक वर्तमान पुलिस ए दिगरे कोन केमती अनुसंधान आरंभ करिछि ताको भेटी करी खंडगिरी थाना पुलिस एबे मामला को गुरुतर सह नहीं जितेबाला लोक मैंने कि जो स्थान लोक मैंने संपुक्त व्यक्ति को माड़ मारी कान धरी उठवास करते से स्थान लगी सीसीटीवी पुलिस जांच कर सहित जो मैंने प्रत्यक्षदर्शी जो मैंने देखी स्थानीय दुकानी से पुलिस पचराउचरा करो भली परिस्थिति में संपुक्त व्यक्ति को स्थानीय लोक मैंने माड़ मारी जदिव संपुक्त व्यक्ति पाखे समस्त डॉक्यूमेंट अच्छी मेडिकल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रही तो किभली भाव लोक मैंने माड़ मारे कहीं माड़ मारे नहीं पुलिस तदंत करुले परिवार लोक थाना को जी परवर्ती मुहूर्त में पुलिस जो वीडियो सामना को आसी स्थानीय लोक मैंने किसी लोक जो मैंने मोबाइल शूटिंग करते वीडियो को पुलिस जांच कर जो मैंने वीडियो देखा पुलिस पचराउचरा कर दीपक हाँ देखो छोट शिशुर संस्कार सही सत्यनगर श्मशान में शेषक संपन्न होती विशेषकर जो बापा माँ छोट शिशु को नहीं सत्यनगर श्मशान को आसे संगे संगे पुलिस हस्तक्षेप करने शेष समस्त कम शेष होवर्ती मुहूर्त परिवार लोक थाना को डकाई थाना पहुंचा पुलिस तार एक्शन आरंभ कर पुलिस आगे से स्थानीय लोक कौन कहते कौन एत बड़ घटना घटला देखो संपुक्त व्यक्ति जी अच्छा माड़ खाई कि मृत शिशु बापा कहवा कथा गत काली विलंबित राति 8 मास शिशु कन्या हठात कहीं देह खराब है परवर्ती मुहूर्त से संगे संगे कैपिटल हॉस्पिटल गए डाक्तर मृत घोषणा करते जो डाक्तर मृत घोषणा करते गरीब फैमिली अति गरीब से शिशु कन्या को एक बैग से नहीं पोषिया नौले तेणु जिते खंडगिरी छक निकट हठात बैग फिरी पड़ा ये समय लोक मैंने देखी बैग भर एक शिशु कन्या मृतदेह रही तेणु लोक मैंने किसी बुझा आगु सन्देह कले बोधे तंतुचिपी संपुक्त व्यक्ति को व्यक्ति मत मारी तेणु भित्तिक लोक को माड़ मारी तेणु से सन्देह ठीक करते बोधे आईन को हाथ को नवा कौटना कौट अपराध तेणु बोधे भित्तिक पुलिस तदंत करुच्ची तेणु जो मैंने स्थानीय लोक मैंने आईन को हाथ में से दिगरे पुलिस एक्शन नब और संपुक्त व्यक्ति जी माड़ खाई जी अभियोग कर से कहवा कथा मेडिकल समस्त डॉक्यूमेंट रही तेणु पुलिस प्रथम मेडिकल डॉक्यूमेंट जांच कर जो डाक्तर डिस्चार्ज करते मृतदेह को पुलिस पचराउचरा कर पुलिस पूरा घटना
निहाती अमानवीय घटना बोली आम ये कहे दीपक कि जदि बापा पाखरे कि पिलार बापा माँ पाखरे जदि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अच्छी पिलार प्रमाण पत्र अच्छी थाई कि स्थानीय लोके कौन ऊपर हाथ उठाइले निहाती भाव कहवा लोक मैंने बोध हुए किसी न बुझी न सुझी हठात आक्रमण कले जड़े 8 मास शिशु कन्या मृत्यु होती समय बापा को माड़ मार कान धरी रास्ता उठबस करवा कौटी ना कौटी कहवा संपुक्त लोक मान विरुद्ध में एक्शन ना आवश्यक रही कथा हूँ लोक मैंने हठात कहीं उग्र हेले जदिव समस्त तथ्य थिला प्रमाण थिला तो ताकू बेसिकली पुलिस तदंत करिवो अन्य पट सब बड़ कथा होची जतबे कैपिटल हॉस्पिटल डेड बॉडी जाउची तो एम्बुलेंस नबा कथा काहे कि व्यक्ति जनक बैग भितर कि अखा बैग भितर मृतदेह नबा ताकू ने मजे कोठा कोठी संदेह प्रश्न उठुची बहुत लोक मैंने ताकू बेसिकली एभली एक घटना सामना को आइले कि रास्ता बीच रास्ता रे संपुक्त व्यक्ति को माड़ मारी आसता उठवास करेले। अच्छा समान प्रश्न आपण करिथिले कि तांको बापा मां को पिलार बापा मां को समान प्रश्न करिथिले कि किछि तांकर किछि अभियोग अछि कि ए नै कि एम्बुलेंस नै देखो तांकर मेडिकल संबंधी कोनोसी अभियोग नाही जेते से जानिबे जे 8 मास शिशु कन्या मृत्यु होइछि तेनु सेमाने एम्बुलेंस को अपेक्षा न करी सेमाने सीधासलख मृतदेह को नहीं पळाइले जदियो पुलिस पक्षरु स्पष्ट होइनि किबा कैपिटल हॉस्पिटल पक्षरु स्पष्ट होइनि जे प्रकृत रे डाक्तर डिस्चार्ज करिया परे एम्बुलेंस कहते ना एमती से मृतदेह को नहीं पड़ाइले यही पर्यटन स्पष्ट होनी परवर्ती मुहूर्त स्पष्ट हम किंतु जहाँ तक बापा कहते डाक्तर को परामर्श क्रमे से ही मेडिकल शिशु कन्या मृतदेह को नहीं आनी तेणु कौटी ना कौटी जब आम कह मृतदेह को बैग भितर आना एभली चित्र राजधानी सामना को आसवा ताकू नहीं अनेक किसी प्रश्न सामना को आसूसी जदिव परिवार लोक सठिक भाव में कहीपार मानसिक अवस्था भल नुह तेणु हूँ आम अधिक पचारा संकट मन पड़े शिशु कन्या पाखे मृतदेह से पाखे रही तेणु कौटी ना कौटी परवर्ती मुहूर्त पुलिस पुलिस तदंत कले ही प्रकृत कथा सामना को आसिबो एवं जदि ताको पाखरे संपूर्ण डॉक्यूमेंट थिला तेबे स्थानीय लोके कोन पई ताको माड़ मारिले से नै कि मध्य आईनगत कार्यानुष्ठान भी ग्रहण कराजिबो। धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना पई। पुणी फेरला जाजपुर जिला बिंझारपुर बहुचर्चित पिहू निखोज घटनार सीबीआई तदंत दाबी कले पिहू मां मोनालिसा नायक 2020 अगस्ट 9 तारिख में गां दांडे खेलुवा बेले रहस्यजनक भाव निखोज हो जाइथिला 2 वर्षर झियो पिहू। परिवार लोकंक एतला परे पुलिस तदंत आरंभ करिथिला किंतु पिहू केमिति निखोज हला कुआडे गला तार खोज खबर भी मिलिला नाही। अभियोग होईछि राजनैतिक चापरे आसी पुलिस तदंत भी शिथिल हो जाइछि सेबेठु परिवार आखिरु लुह सुखुनी झियो को गुमुरी गुमुरी खोजुछि मां। पिहू निखोज 2 वर्ष पर मां मोनालिसा नायक झियोर फोटो धरी राजधानी को आछंती राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन को भेटिछंती। पिहू निखोज घटनार सीबीआई तदंत दाबी करिछंती एथिपई कमिशन को 15 दिन समय देइछंती मां मोनालिसा। जदि ता भितरे कमिशन कोनोसी पदक्षेप न नियंती तेबे कमिशन को ऑफिस आगरे धारणा देबे बोली मोनालिसा कहिछंती। सेपटे शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन कहते घटना से मुख्यमंत्री नजर को आणबे सीबीआई तदंत दाबी उपरे मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करेंगे। जेहेतु आपणकर शिशुटी हजिला एवं तापर आपण अनेक बार द्वारा शुंडी पिंडा हेले पुणी 2 वर्ष अतिक्रांत करिगला किंतु एजाई आपणको पत्ता मिललानी कोन आपण भाबुछंती क्लास छंती मु तो आशा भरोसा नहीं कि आसी कहीं दीदी थर भी मुझे विफल होती समस्त द्वारस्थ हो सारी कि कहीं मत न्याय देले मिछ प्रतिश्रुति देते द्वारस्थ होते राज्य पंचायत पाखर ओडिशा पंचायत पर्यंत सबुआड़ समस्त द्वारस्थ होती कलेक्टर एसपी शिशु विकास मंत्री जो शिशु कमिश्नर द्वारस्थ भी होती सीएम सार को भी मु दाबी पत्र चिठी मध्यम भी ये कर भेट करने भी जाइए मत साक्षात करना विधानसभा भी धारणा
धारणा बसिया जिते परमिशन लेटर पर जाऊली बाटर भी अटकई मत जबरदस्त सौमेन्द्र प्रियदर्शी सार सहित नहीं भेट करते क्राइम ब्रांच तदंत हम किंतु कौन तदंत ही है 2 वर्ष गोटे मस पूरा को बसला मो पिलार अस्तित्व कौन भी जापारे जेहेतु आम घर कई लोक ना मो भाई मैंने बाहर अच्छा मो बाबा जी भी नहांती सी से लगी आम घर परिस्थिति देखी प्री प्लान करी पिलाटा को सेठी नहीं लोकल थाना आईएस भेटी एफआईआर देते से प्रतिश्रुति कौन था सीए मते प्रथमे तो मिसबिहेव करके माने जा कथा मु भी निजे तू ता पाखर आरंभ करके माने स्थानर स्टाफ सबू मते दुर्व्यवहार करके विदा करथिले तापर जो गणमाध्यम प्रसारित है 4 मास पर समस्ते जाई मते मिछ प्रतिश्रुति देले कि हाँ एटा को आमे निज छुआ भलिया देखिबू कि आम राज्यर छुआ जेहेतु आम छुआ भलिया भाबी कि एटा को तदंत करिवु पिलाटा केमिति रेस्क्यू करिवु तापर भी शिशु खोजा अभियान भी हेतिला मो पिला पर्यंत मते मिली पाइलानी। अच्छा जेतला जी आपण कमिशनर को भेटिले चेयरपर्सन को भेटिले एवं ताकर प्रतिश्रुति कोन थिला सीए कहले तो मो हाथ रे नाही सिफारिश करिया पे सीबीआई पे जेहेतु आपण देइचंदी राज्य सरकार को मु एटा को हस्तांतर करि देबी तांको को पठेई देबी सीए क्राइम ब्रांच तदंत देबे कि सीबीआई तदंत देबे सेटा सीए डिसाइड करिए मु सेतिले कि मु भी लेखि कि दाबी पत्र रे देइची जदी 15 दिन भीतर एटा सीबीआई तदंत को हस्तांतर न करा जाउची ताले मु धारणा बसिबी इट मो छुआ जेहेतु न मिली मत मुझे पर्यटन न मिलला पर्यटन मुझे संघर्ष करुथी मो देह प्राण थिला पर्यटन मो छुआ संघर्ष करी मो छुआ मिलीगला जाइक जो कथा आपण देखुथिले जे किभଳି भाबरे तांका आखिर लोतक बहुची एवं से मध्य अति दुखर भांगी पड़िछंती एवं किभଳି भाबरे तांका छुआ पे गोटे मा लड़ाई करूची एवं जे पर्यंत सीबीआई इनक्वारी न होईची एवं दोषी न धराइछंती तने से पर्यंत 15 दिन महल तमसन देइछंती जे निखोज शिशुर मा एवं 15 दिन पर जदि तांकर कोनोसी दाबी को ग्रहण न करा जाए तबे निहायत भारे से पुणी आसिक एठी धारणा रे बसिबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मानस पटनायक सुमंत सुंदराय न्यूज18 ओडिया। जाजपुर जिला बिंझारपुर अंचल मधुस्तनपुर गाँ से दिन थिला 2020 मसीहा अगस्ट 9 तारिख गाँ दाण्डे खेलुला 2 वर्षर झील पिहू ओरफ शुभलक्ष्मी सेतेबेले कोरोना संक्रमण शीर्ष थिला बेंगलुरु रे काम करुथिबा पिहूंक बापा लक्ष्मण नायक गाँ को फेरिथिले भी संक्रमण भୟରେ संगरोधर रहिथिले मां मोनालिसा नायक आई कविता नायक समस्ते थिले घर भितरे गाँ दाण्डे जेतेबेले पिहू खेलुथिला हठात केउआडे चली जाइथिला खोजी खोजी दिन सारा बीतीगला घर को पिहू फेरिलानी कि परिवार लोक पिहूर कौन खोज खबर पाइलेनी ता परदिन बिंझारपुर थाना को जाई झीर निखोज हेबा नै एतला देले बापा मां चाहू चाहू गणमाध्यम शिरोनामा पलटिगला पिहू निखोज घटना दिन गड़िला तदंत आड़ देखाई समय गड़ाई चलला पुलिस हेले पिहू कुआडे गला केउठी रहिला केही खोजिलेनी कि खोजिबाकू उद्यम भी कलेनी कुनी झीर फटकू धरी कांदी कांदी लुह गड़ाइले पिहूर बापा मां या भितर 2 वर्ष बीतीगलानी पिहू घटना को पासरी देलानी पुलिस तदंत तो दूर कथा पुलिस फाइल रु बोधे गायब हो गलानी पिहू निखोज मामला अभियोग हेउछि कि पिहू को अपहरण करी हत्या करा जाइछि आ ए घटना पछरे कोनोसी प्रभावशाली व्यक्तिंकर संपृक्ति थिबारु पुलिस पिहूर फाइल को चापी देइछि ए घटना अत्यंत सांघातिक एवं संवेदनशील गाँ दाण्डे 2 वर्षर झील को अपहरण करी हत्या करा जाइथिबा अभियोग को केमिति पुलिस चापी देला और कहा निर्देश रे घटना को एडाई गला ताहा एबे विराट प्रश्नबाची या भितरे पिहूंक परिवार मुख्यमंत्री ठारू आरंभ करी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मध्य चिठी लिखिछंती कोनोसी सुफल मिली नाही बाध्य होई पिहूंक मां कहिछंती झील संपर्क रे तदंत होई सत्यपदा को न आसिले से जीवन हारि देबे एमिति कि मां मोनालिसा इच्छा मृत्यु पाई मध्य जिलापाल को सुपारिश करथिबा कहिछंती सरकार न्यायिक व्यवस्था सबुआड़ द्वारस्थ होती केवल मिछ प्रतिश्रुति मिलता इच्छा मृत्यु भी आवेदन करी जदि मत सीबीआई तदंत दिंतु नचेत मत इच्छा मृत्यु दिंतु कि मो कथा कई शुणिले नहीं कि इच्छा मृत्यु मो जो आवेदन करी मो आवेदन आदेश देले कि मत इच्छा मृत्यु कहीं बचे चाहूनी मो छुआ जदि मत न मिलला बची कौन कर आज 2 वर्ष पूरी गलानी राज्य सरकार कौन डरुचंती कौन रहस्य अच्छी कौन पाई डरुचंती बहुत केस को हैंडओवर करके ठीक करके पिला को सब खोजी मिलाई दौरान पीयू केस कौन रहस्य रही कहीं तदंत करूना गुरुत्व भाव में कहीं तदंत करूना कौन असुविधा रोचे सब सल्व करने चेष्टा कर कहीं किसी रिजल्ट ना 2 वर्ष है गोटे माँ ठारू छुआटे अलग रही से मार अवस्था कौन हो तो
शुणिकी आसूची देखिकी आसूची केते थर पुलिस भाई आसुंती पुलिस सार आसुंती अंके एसपी आसुंती डीजी आसुंती ये दुनिया प्रहसन चलती देखला बेलू 2 वर्ष है किसी रिजल्ट नहीं। ग्राम पंचायत रु राज्यर बड़ जो अच्छी विधानसभा लोक मानकर जो सभा से जगार भी से जाकि फेरलानी ये माने विधायक होचन कोन पई खाली तथाकथित भाषण देवे दरमा बोला बेले हाथ समस्ते एकजुट टेकिबे कहीं एक कथार एकजुट है कि विरोधी शासक एकजुट होना ये छुआटी कुआड़ जाइए आम तदंत करवा तदंतर भार आम बड़ एजेन्सी को दवा कौन पाई दौना खाली टीवी रे भाषण दौरान। बापा मांकर जो अभियोग रही कि 2 वर्ष है पिला गायब है किंतु वर्तमान पर्यंत तदंतर शिथिलता सामना को आसी केही भी एथिरे सक्रियता देखाऊ नाहंती से नहीं अधिक आलोचना करबा जाजपुर करेस्पोंडेंट सुजीत कुमार मल्लिक अच्छा नमस्त फोन लाइन रे। सुजीत 2020 रे घटना आपण जतबे कवर करथिले ग्राउंड रे आपण पहुंचीथिले से गां को जाइथिले से लोक मानक सहित कथा आइथिले तांको बापा मांक सहित कथा आइथिले कोन थिला रिएक्शन से मानकर से माने कोन कहूथिले? मसीहा अगस्त 9 तारिख दिन एवं ये जो 2 वर्षर नाबालिका जनक गाँ दांडर खेलुवा समय निखोज हो जाता और परवर्ती समय खोजाखोजी करने बहुत खोजाखोजी करने सन्धान न मिलता परवर्ती समय से बिहारपुर थाना एतला देते अभियोग कर प्राय 2 वर्ष टपीगला बर्तमान सुधा से पिलार अस्तित्व नहीं प्रश्नवादी सृष्टि होती तार एपर्यंत ठाठिकाणा मिल पारे जो बापा माँ ग्रामवासी और परिवार लोक समस्त भितर गोटे प्रतिक्रिया प्रकाश पाई क्षोभ प्रकाश पाई जो परिवार लोक और ग्रामवासी माने घटनार सीबीआई तदंत दाबी कर आज पिहुर माँ जाकि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिशनर पाखे धारणा बसी। अच्छा जितेबाला पुलिस पाखक ये घटना जाइथिला स्थानीय पुलिस पाखक जितेबाला खबरटी जाइथिला कि अभियोग जाइथिला सेतेबेले तदंतर सक्रियता आपण नजर को आसथिला कि? देखंतु घटना परवर्ती समय ठारू आज पर्यंत पुलिस एसपी बारंबार हस्तक्षेप करचंती एवं पूर्व जो एसपी थिले तापर आउ जण एसपी आसिले 2 जण जाक एसपी एतरे हस्तक्षेप करथिले एवं जो पोखरी गाँ रे रही घर पाखे जो पोखरी रही नई रही याकू बहुत खोजाखोजी कराइथिला एमती कि पुलिस पक्षरु गोटे पोखरी को उजळा जाइथिला पूरा संपूर्ण मात्रा काले पिलाटी सेठी पड़िथो बोली किंतु सेठु भी किसी चिन्ह वर्ण मिल नथिला। तेणु वर्तमान प्रश्न होची जे पिलाटी 2 वर्ष हला जदि निखोज हला ताले कोठी से पिलाटी रहिछि एवं को अवस्था रे अछि एवं जदि अपहरण हेछि ताले अपहरण किए करिसंती केउ कारणरु करिसंती यार पुंखानुपुंख तदंत हवा आवश्यक जोटा कि परिवार लोक माने बारंबार दाबी करि आछंती आज पर्यंत। एवं ये नहीं कि जहाँ पिहुर माँ कहते कि से प्रत्येक लोकर द्वारस्थ होती जो मान हाथ में हुए तो ये कार्य हो पारि था एवं से तलठू आरंभ कर ऊपर स्तर समस्त पाखरे द्वारस्थ होती किंतु ताकू कौनसी भी ए नहीं कि सुफल मिल पारि नाही। देखो बंधुता आपनकर पिहु घटना परी सही समय परी घटना समय घटिला एवं सही परवर्ती समय घटना जेहेतु सही समय ठीक जो नाबालिका अपहरण व नाबालिका को तार पता कर विफल होता पुलिस प्रशासन विभिन्न जगह से समय घटना घटी किंतु पर जमी रहस्य उन्मोचन है ये क्षेत्र में पिहु को अवस्था तार पिला खेलुवा अवस्था जदि अपहरण है निखोज है तार ठाठिकणा करने दरकार को निर्दिष्ट भाव से को अवस्था अच्छी अस्तित्व को लेकिन तदंत को सक्रिय करने दरकार और उच्चस्तरीय तदंत हवा दरकार जोटा कि ग्रामवासी परिवार लोक बारंबार विभिन्न महल राजनीतिक नेता आरंभ करी जनप्रतिनिधि आरंभ करी पुलिस प्रशासन राज्य सरकार पर्यंत विभिन्न महल से प्रति अभियोग आनी। अच्छा 2020 जदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन आरंभ करथिला किंतु कोनोसी सुराक न मिलिथिला ताहाले वर्तमान पर्यंत से फाइल कोन बंद अछि ना इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ता भीतर चलै छी किछि रिएक्शन नै छथि आपण? देखंतु मंदिता आज भी पुलिस को आपण प्रश्न कले पुलिस सही गोटे कथा जे घटनार तदंत चली विभिन्न दिगरु साइंटिफिक टीम थार आरंभ करी विभिन्न दिगरु पुलिस तार तदंत प्रक्रिया जारी रखी बोली पुलिस पक्षर सब बेले आमको सूचना मिलूँ किंतु वास्तव में जब से तदंत कहीं पिलार अस्तित्व जना पड़ूनी पिला
ସନ୍ଧାନ ଜଣା ପଡୁନି। ଏଇଟା ନେଇକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 2 वर्ष हो गलानी सुजित घटना को किंतु 2 वर्ष गोटे मार तो मन बुझीबनी 2 वर्ष हेउ किंबा 20 वर्ष हेउ मां सब बेले ता छुआ को झुरिबो। आउ गोटे कथा रहउची वर्तमान पर्यंत उच्च स्तरीय तदंत नै कि कोन पई केही मुह खोल नांती। देखंतु बंदिता ये जेतबेले पिलाटी निखोज होला से समय ताकू जेतबेले प्रथमे बिंझारपुर थाना परवर्ती समय एसपी को कार्यालय पानी कोरी एसडीपी ए महल जो विफल हेले कौन उत्तर पाइले नहीं। परवर्ती समय से विधानसभा चलता समय विधानसभा को घेराव कर विधानसभा आगे धारणा देवाई से उद्यम करते बाटर बुझासुझा कर फेर अणाई। परवर्ती समय से मानवाधिकार कमिशन शिशु विकास कमिशन विभिन्न जगार से जाकि द्वारस्थ होती आज पर्यंत विभिन्न जगह जाइए कि जिलापाल कार्यालय को आसिकी इच्छा मृत्यु निवेदन करते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विभिन्न महल से आपत्ति अभियोग करिसेंती किंतु वर्तमान सुधा भी तार कौन ठिकाना मिलनी पिलार संधान मिलनी। जहाँ को आमे नेता बोली कहूचे किंबा विधायक बोली कहूचे किंबा से अंचल जे लोक प्रतिनिधि अछंती तांकर मध्य द्वारस्थ होइथिबा कथा पिहुंक मां परिवार लोक भी कहउछंती से किछि रिएक्शन रखिछंती कि देखो पिहुर निखोज हवा पर अनेक समय विरोधी दल कहतु क्षमतासीन सरकारी दल कहतु विभिन्न नेता माने घर पाक जाइछंती विभिन्न आश्वासना प्रतिश्रुति देइछंती एपर्यंत से प्रतिश्रुति केवल पाइछंती किंतु कौन प्रकार से भली ठोस पदक्षेप नेता मानक पक्षरु दिया भली जना पड़े ना जो कि आज तार संधान मिल पारेनी। गोटे छोट शिशु मात्र 2 वर्षर शिशु सेतबेले निखोज होता आज 4 वर्ष कि 5 वर्ष होता से शिशु को से को अवस्था अच्छी तार अस्तित्व को लेकिन राजनीतिक दलर नेता आरंभ करी दलीय कर्मी सरपंच समिति एमाने जो भली प्रतिश्रुति निर्वाचन समय देइचंती परवर्ती समय से भली ढंग से नहीं ना जो कि आज पर्यंत ये कथाटी चाषी रही। आशा करवा सुजित घटना को तो 2 वर्ष बीती सारलानी किंतु एटलिस्ट वर्तमान जदि मां जने गुहारी करूछंती समस्त घर एथिरे हाथ मिसेबा दरकार छुआ केउठी अछि केउ अवस्था रे अछि से नै कि टिके तनाघना करिवार आवश्यकता अछि टिके सक्रियता सेथिरे समस्त घर आमे आशा करूछु एटलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुजित वर्तमान पई सविशेष आलोचना पई। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा सब रोग सफा। बहु प्रतीक्षार अंत माटी रे मिसला नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर अपराह्न 2:30 मिनिट्रे मात्र 7 सेकेंड रे ध्वंस हो गला दैत्य अट्टालिका 3700 किलोमीटर विस्फोरक उड़ाई दिगला पूरा अट्टालिका। ब्लास्ट हेबा परे 10 रु 15 मिनिट जाए धुआंमय परिवेश होइतला संपृक्त अंचल 200 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उड़ीथिला धूली धूलीमय हो जाइतला स्थानीय घरद्वार पार्क एवं एक्सप्रेस वे। विस्फोरण बेले कंक्रीट रु जो धूली उड़िला ताहा द्वारा स्थानीय अंचल रे वायु प्रदूषण होइछि। 30 मिनिट पर्यंत अनुभूत होइतला कंपन बा भाइब्रेशन। ब्लास्ट साइट ठारू 1 किलोमीटर पर्यंत पड़ितला प्रभाव। 3 घंटा पर्यंत आखपाख अंचलवासी निश्वास नेबारे समस्या होइतिबा कुआ जाउछि। राष्ट्रीय कांग्रेस पाइब नुआ अध्यक्ष अक्टोबर 17 रे हेबो एआईसीसी अध्यक्ष पई निर्वाचन अक्टोबर 19 रे हेबो भोट गणति। रविवार बसितिबा कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी सीडब्ल्यूसी बैठक रे एने निष्पत्ति होइछि। निर्वाचन पई सेप्टेम्बर 24 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य रे नामांकन समय धार्य होइछि। अक्टोबर 1 रे हेबो जांच अक्टोबर 8 रे हेबो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार। से भली सीडब्ल्यूसी बैठक रे महंगाई विरोध रे हल्लाबोल और भारत जोड़ो यात्रा प्रसंग रे आलोचना होइछि। टिकटॉक स्टार तथा बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाटंक मृत्यु मामला रे होई पारे सीबीआई तदंत।
मामला संवेदनशील थिबारु सीबीआई तदंत पई सुपारिश करिपारंती गोवा सरकार। एने सूचना देछन्ती गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। से कहिसन्ती एही प्रसंग रे हरियाणा मुख्यमंत्री सह आलोचना होईछि। आवश्यक पड़िले मामलार सीबीआई तदंत कराजिबो। एपटे मामलार आउ जणे ड्रग्स व्यवसायी को गिरफ करिछि गोवा पुलिस। एजाबत 5 जन को गिरफ करी छानबीन जारी रखिछि पुलिस। होटेल मालिक और 2 ड्रग्स व्यवसायी को 5 दिन रिमांड रे नेछि पुलिस। भू उदयगिरी एसआई आत्महत्या मामला रे बदलिबे भू उदयगिरी आईआईसी रेवती सबर। जिला मुख्य कार्यालय को बदलिबे रेवती। एने प्रतिश्रुति दैछन्ती कंधमाल एसपी विनीत अग्रवाल। आईआईसी को बदली दाबी रे धारणा रे बसितिले स्वागतिकांक परिवार। एसपी को प्रतिश्रुति जेल भितर दुर्दांत अपराधी को मरणांतक आक्रमण अभियोग। गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना को स्थानांतर। पुरीर हार्डकोर अपराधी पप्पू बराल को पुरी जेल में मरणांतक आक्रमण होईछि। जेल भितर धारुआ अस्त्र पप्पूर तंटी काटी हत्या उद्यम करा जायछि। रक्त जुड़बुड़ अवस्था गुरुतर पप्पू बराल को पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय सर्जरी वार्ड में भर्ती करा जाय चिकित्सा चली। तेबे काहींकी एवं केउ परिस्थिति पप्पू भली जड़े हार्डकोर अपराधी उपरे मरणांतक आक्रमण हैला एथिरे किए संपृक्त तार तदंत चलिथिबा पुरी जेल सुपरिटेंडेंट सूचना दैछंती। गत सप्ताह रे पुरी समुद्रकूल थाना पुलिस अभियुक्त पप्पू बराल को विभिन्न मामला रे गिरफ्त करथिला। पप्पू नारे एकाधिक संगीन आपराधिक मामला भी रहिछि। आज घटना तो खबर पाइलु जे किए पछार छुरी मारिछि बोली जेल भीतर घटना घटिछि बोली विश्वास केमिति करिवु ना कोन से मन को मन छुरी मार देला तार कोन असुविधा की सेटा से निश्चिंत वस्तुविका दाई ता भीतर थेबे बिलियन से भी दाई ता भीतर के षडयंत्र थिबे हां इतला ता स्त्री दबा। जी उदयगिरी एसआई स्वागतिका बेहरा मृत्यु घटना बदलिले घु उदयगिरी आईआईसी रेवती सबर। जिला पुलिस मुख्यालय रेवती बदली होईछि। बदली नहीं सूचना दैछंती कंधमाल एसपी। टिकाबाली आईआईसी को जी उदयगिरी थाना दायित्व दिया जायछि। परिवार लोकंक अभियोग आधार में तदंत करा जाउछि। तदंत भार हेडक्वार्टर जड़े सीनियर डीएसपी को दिया जायथिबा एसपी विनीत अग्रवाल कहिसंती। कंधमाल जी उदयगिरी महिला एसआई सागरिका बेहेरा मृत्यु घटना रे परिवार लोकंकर निज घर निराकारपुर पंचायत सम्मुख में रास्ता रोक। परिवार जन लोकं को चाकरी मां को पेंशन थाना अधिकारी बहिष्कार और गिरफ दाबी में विक्षोभ करथिले। दीर्घ 5 घंटा आंदोलन और रास्ता रोक पर घटनास्थल में टांगी वीडियो पहुंची बालुगां एसडीपीओ आलोचना कर परिवार लोकं को निर्भर प्रतिश्रुति देवा पर रास्ता रोक हटिछि। सेपटे सागरिका मृत्यु को नहीं गांव में शोकाकुल परिवेश में अंतिम संस्कार करा जायछि। परिवार सहित आम प्रशासन तरफ आलोचना कलु से प्रतिश्रुति देते से जहाँ भी दाबी अच्छी सरकार निकट को पहुँचेबे एवं से काली लिखित हिसाब से आसिक प्रतिश्रुति देवे जे आम निहाती चेष्टा करूँ सब दाबी पूरण करने आम जो डिमांड करूँ जे आमर दुई भाई को चाकरी से कहले दुई भाई चाकरी दे जन को चाकरी दे हेब आउ जहाँ डिमांड अच्छी तदंत अनुसार जो आईआईसी की अरेस्ट करा सरकार हाथ में जहाँ अच्छी आम परिवार को दवाई आम जो डिमांड करूँ से राजी होती सरकार एपाई बहुत व्यग्र एवं बहुत शीघ्र ए केस तदंत जन उच्चपदस्थ अधिकारी द्वारा कराइबे। जदि आईआईसी एथरे संपृक्त था विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। परिवार जन को चाकरी देवार प्रतिश्रुति देले एवं लिखित भाव में काली देवे एवं एक पारिवारिक पेंशन जोड़ा फैमिली पेंशन कहा जाए ताकू मध्य मंजूर करिसेंती। परिवार अदालत परिसर रे हाई ड्रामा कृषि अधिकारी को पिटिले स्त्री एवं सहयोगी। बालेश्वर जिला परिवार अदालत परिसर आछि एभली अभियोग। कृषि ऑफिसर सिद्धार्थ स्वरूप जेना तांको स्त्री विरोध में एक छाड़पत्र केस फाइल करिसंती। एने आज उभयंकर काउंसेलिंग रहिथिला हेले हठात कोनोसी कारणवशतः उभय पक्षक मध्य जोर रे मारपीट एवं प्रबल पाटितुंड देखा मिलथिला। एने सिद्धार्थ स्वरूप को कहवा अनुଯାयी से स्त्री विरोध में छाड़पत्र फाइल करिबारु स्त्री एवं तांको संपर्कीय तांको ऊपर आक्रमण करिसंती। तेबे तांको स्त्री एने कोनोसी प्रतिक्रिया देई नथिबा बेले थाना रे एजाय कोनोसी मामला होइनी। हाइड्रामा देखा मिली परिवार अदालत परिसर रे कृषि अधिकारी को पिटिले स्त्री एवं सहयोगी। बालेश्वर जिला परिवार अदालत परिसर एभली किछि अभियोग आसीछि। कृषि ऑफिसर सिद्धार्थ स्वरूप जेना तांको स्त्री विरोध में छाड़पत्र केस फाइल करिसंती। आज उभयंकर काउंसेलिंग थिला।
किंतु हठात जो घटना सामना को आसी कौन कारणवशतः उभय पक्षों मध्य हठात जोरे पाटितुंड होइथिला एवं परवर्ती समय मारपीट मध्य होइथिला। सिद्धार्थ स्वरूप जहाँ कहते जे स्त्री विरोध में छाड़पत्र से फाइल करथिले, स्त्री एवं तांकर किछि संपर्कीय तांको उपर आक्रमण करिसंती, किंतु एने कि तांको स्त्रींकर कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। थाना रे भी एजाए कोनोसी मामला होइनी। फैमिली कोर्ट रे हाइड्रामार दृश्य वर्तमान देखा मिली। बालेश्वर जिला परिवार अदालत परिसर रे कृषि अधिकारी को पिटिछंती स्त्री एवं सहयोगी। पत्नी को विरोध में फाइल करिछंती छाड़पत्र मामला। जे कृषि अधिकारी अछंती सिद्धार्थ स्वरूप एवं एई घटना रे हठात उत्त्यक्त हो जाइतिले दुई पक्ष। अधिक आलोचना करबा हम प्रतिनिधि सत्यजित अछंती आम सहित फोन लाइन रे। सत्यजित, पूरा घटना कौन एवं वर्तमान कौन ए की पदक्षेप? देखो बनता जहाँ स्वामी जो कथा जो कृषि विभाग जो अच्छा अधिकारी जहाँ कहवा कथा जे स्त्री ना एक छाड़पत्र मामला करते जहाँ को लेकिन भितर आज काउंसलिंग डक जाता कोर्ट रे। जेहेतु आप जानते प्रक्रिया रही प्रथम काउंसलिंग उभय को बुझा चेष्टा करवर्त समय जदि समाधान ना छाड़पत्र हो पूर्व जेहेतु प्रथम पर्याय फाइल करने आज प्रथम थर पर काउंसलिंग डका उभय को, किंतु हठात बाहर किसी समय भितर कथबार्ता होती परवर्ती समय जो माड़गोल उभय पक्ष भितर माड़गोल लगी जहाँ देखा मिलता है पाटितुंड माड़गोल एपरी परिस्थिति होता स्थानीय उपस्थित जो वकिल मैंने रही आईनजीवी और साधारण लोक से छड़ेवा चेष्टा करते किंतु एत जोर जो माड़ पिटापिटी लगी जहाँकि छड़ेवा कष्टकर हो पड़ता। अवश्य किसी समय पर जो उभय पक्ष जो वकिल बसी आलोचना पर ये घटना शांत होती जो स्त्री रही सी थाना को जाते अभियोग करने को, किंतु बर्तमान सुधा अभियोग कौन थाना कराई कहारी पक्षर, किंतु जहाँ स्वामी अभियोग अच्छी छाड़पत्र स्त्री तेणु स्त्री और जो संपर्क रही परिवार लोक से जाशुणी आक्रमण कर पैंट सार्ट छिड़े देती चषमा भांगी अनेक अभियोग स्वामी पक्ष कर देखो स्त्री को आम संपर्क में पचार बारंबार चेष्टा करूँ किंतु किसी कहे ना बोली सीधा सड़क मना कर देते जो स्वामी सामना को आसी सब जिन प्रतिक्रिया रखी सब जिन कहते कि स्त्री पक्ष कौन प्रतिक्रिया रखा जाए कि भिजुआल स्पष्ट देखा माड़गोल माड़गोल उभय पक्ष को आक्रमण कर सहित पाटितुंड बहुत जोर था जहाँ भिजुआल रही किंतु स्त्री पक्ष हे तो परवर्त समय थाना मामला दि जापे कोर्ट परिसर जेहतु घटना घटी तेणु जो रही आईनजीवी मैंने घटना को नापसंद कर तेणु परवर्त समय जदि कौन ना अभियोग हम स्पष्ट हो पार प्रकृत घटना कौन था, किंतु वर्तमान पक्ष जेहेतु स्वामी पक्ष से केवल रखी तेणु जहाँ जना पड़ी छाड़पत्र को नहीं घटना घटी स्त्री परवर्त समय पक्ष रखती प्रतिक्रिया रखती स्पष्ट हो पार ये माड़गोल पछरे प्रकृत में कौन कारण होता। धन्यवाद सत्यजित सविशेष आलोचना। राजधानी को अलिया अड़ुआ फिटुनी समाधान बाट रास्तार पड़ रही कूड़ कूड़ अलिया टेंशन ने बीएमसी दारुठेंगे अलिया पड़ब कि नहीं बायोमाइनिंग प्लांट हेब कि नहीं कौन निष्पत्ति नेबे दारुठेंग बासिंदा अलिया अड़ुआ को नहीं आज दारुठेंगे बसिब ग्राम सभा दारुठेंग सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर गाँव मुरब्बी आलोचना कर शेष निष्पत्ति नेबे। शनिवार दारुठेंग ग्रामवासी बीएमसी कर्तृपक्ष आलोचना करथिले। बैठक में ग्रामवासी 2 दिनर मोहलत नहीं तेबे निज जिद्रे अटल अछंती दारुठेंग ग्रामवासी कौनसी परिस्थिति रे दारुठेंगरे डंपिंग यार्ड कराई दिया जीवन नाही बोली सेमाने चेतावनी देइछंती। अन्यपटे गाँ लोकंको दुर्दशा कहिले न सरे डंपिंग यार्ड बंद जोगु माळमाळ कुकुर एबे गाँ मुहा कुकुर काहाकू कामुडिलेनी तो काहा घरे पशिलेनी याकू नै ग्रामवासी भी भयभीत अवस्था अछंती। सेपटे दारुठेंग ग्रामवासींकर प्रथम बैठकरू कौनसी निष्पत्ति बाहरी पारि नाही। आज संध्यारे पुणी बसिबो ग्रामवासींक बैठक। गतकाली संध्यारे बसिथिला ग्रामवासी बैठक और बैठक में ग्रामवासी निष्पत्ति जे कौनसी परिस्थिति रे दारुठेंगरे अलिया पकाई देबे नाही। एमती तो गोटे पर गोटे टाइम पर टाइम नौकर आसिक पुणी से अलिया पकाउछंती एटी बहुत असुविधार सम्मुखीन आम होचु रोग व्याधि पड़ुचु एक्सीडेंट रे हमर लोक सब मरुचंती हजार हजार गोरु गाई मरुचु से अलिया गाड़ी रे धक्का आईकी तार ग्यारंटी किए नब जे बीएमसी कहूँ पकईबनी आपणकर अलिया सकाशे आम गाँव में बुला कुकुर 500-700 कुकुर आज्ञा तापर चर्म रोग रे कैंसर रे बहुत लोक मले
आउ केते ये बीएमसी कमिशनर हुंतु कि ओडिशा सरकार हुंतु केबे सचेतन केबे हेबे आमे कोन मनुष्य नुहे आमे कोन आपण मानु भोट देकी जितौनु जेतु बड़ मनुष्यकर इम्यूनिटी पावर अछि तांकर किछि होउनी छोट पिला मानकर कुंडी कंडी होउची गाई गरु प्रबल नष्ट पानी भी खराब हे गेलानी पानी रे लेयर सब नष्ट हे गेलानी ठस निष्पत्ति होबन तो संपूर्ण आमे एठी अलिया पकई दबुनी बोली हमर जनमत विरोध करछिन जा फल रे समस्त मुखिया लोक दायित्व निसिन जे यार कोन प्रतिकार करा जो आज संध्या बेले बसिले सब आलोचना हबो आलोचना हैला पर जहा निष्पत्ति मिलिबे सेपटे दारुठेंग डंपिंग यार्ड विवाद मामला रे नगर उन्नयन मंत्री उषा देवी प्रतिक्रिया रखिछंती प्रसंग को नै मेयर एवं कमिश्नर आलोचना करूछंती ग्रामवासी को बुझा चलीछि आशा रहिछि 2 ରୁ 3 दिन भितरे समस्यार समाधान होई जिवो एथि सहित बायो माइनिंग प्लांट ऊपर विचार करा जाउथिबा मंत्री उषा देवी कहछंती कमिश्नर और हमरो मेयर भी सेटारे व्यस्त अछंती आउ तांके भी गोटे आमे भी चेष्टा करछु गोटे कोहेले गोटे समाधान पहुँचवा लगी आईटा तो देखू जहाँ ए 2-3 दिन भितर मु भावुची आग्रह भी हो पारे जहाँ गोटे समाधान पॉइंट को आसो से कथा बुझुचु देखा कौन हम बाबू 2-3 दिन भितर देखो सेटा भी कथा चलছে प्लांट हवा कौन असुविधा रोचे काहे विलंब होची आज्ञा से प्लांट हवा काहे विलंब होची नहीं विलंब होची बोले तार किसी ये अच्छी सेरा सब समाधान न हेले गोटे प्लांट खोली दबाटा ठीक हम नहीं एणुक चली तो आम जारी रखीचु आम डिस्कसन सब आमती गोटे समाधान रास्ता खोलू से बहुरूपी एंडुओ चोराचालान रैकेटर पर्दाफाश बहुरूपी एंडुओ बिक्री डील बेले धरा पड़े माफिया 1.5 लाख बिक्री उद्यम बेले 2 जन को धरिला वन विभाग गिरफ 2 अभियुक्त हेले जगतसिंहपुर तीर्थल क्षीरोद महांती और रश्मिरंजन दास भुवनेश्वर सिटी फॉरेस्ट कब्जा रे 2 माफिया थिबा बेले राज्य बाहर को चोराचालान उद्यम करा जाउथिला वन विभाग सूचना अनुसार 2 अभियुक्त जटणीर जड़े व्यक्ति बहुरूपी एंडुओ आनिथिले तेबे कहा पाखरु आनिथिले काहाकु बिक्री करिथांते से नै तदंत चलिछि बहुरूपी एंडुओ चोराचालान अर्थात बिक्री करने अभियोग में अजा नाती को गिरफ्त कला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमे आपन को प्रथमे देखैबू जो बहुरूपी एंडुओ को जब्त करछि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपन देखि पाउथिबे भुवनेश्वर बीएसएस नगर स्थित बस स्टैंड रु याको जब्त कराइछि अजा नाती जे कि जगतसिंहपुर अंचल सामाने ए एंडुओ को नहीं 1.5 लाख टंका बिक्री करने योजना करते तेरे एंडुओटी खोर्धा जटन आनी ए जो बहुरूपी एंडुओ को एमाने क्या बिक्री कर स्पष्ट होनी किंतु 1.5 लाख टंका गोटे निरीह जंतु को सामान्य बिक्री करने योजना करते पूर्वर केबे योजना करते कि नहीं ताहा बे तदंत परिसरभुक्त किंतु ये जो बहुरूपी एंडुओ को सामान्य क्या बिक्री करते कहीं बिक्री करते कि आनी से दिग नहीं एवं तदंत करुच्ची वन विभाग तेरे ये जो बहुरूपी एंडुओ जबत होती ताकू भित्ति करी विशेष करी तदंतर जो केवण को जाऊँगी से नहीं अधिक आलोचना करवा विशेष करी आम सहित अच्छा सिटी रेंजर अच्छा सार निहाती आम अधिक आलोचना करवा सार अजानाती गिरफ होती गोटे एंडुओ बिक्री करने अभियोग एंडुओटी से क्या बिक्री करते क्यों जबत है कौन सब तदंत चलती बर्तमान तदंत चली बर्तमान सांगे सांगे एंडुओ प्राय अध घंटे हम जबत हो तेणुक तदंत प्रक्रिया कार्यक्रम आरंभ हो सरला आपको जनइबी सर कहुच्छी एंडुओटी 1.5 लाख टंका डील होता 1.5 लाख टंका डील सर ये जो एंडुओर डिमांड कौन डिमांड कहीं थी निश्चय यार डिमांड थी बोली तो 1.5 लाख टंका से डिमांड करते आमको दिंतु सर पूर्वर केबे आपन नजर एभली किसी बहुरूपी एंडुओ डील करबा किसी ना मो नजर ना कि आमर डिपार्टमेंट तरफ बहुत थर एमती डील कर लोक धराई ये कराई अरेस्ट कराइना कोर्ट फरवर्ड करा सर केमती खबर मिला जे अजानाती गोटे बहुरूपी एंडुओ नहीं कौन विश्वास सूत्र काली ठारू आमर योजना आरंभ होता इनको धरिया से हिसाब से आमर सहित टच रहीकिना धरिया योजना करूँ शेष धरलु
सर एमाने कोन खुला नउथिले ना किछि बैग पेन से डबा डबा जो देखुछन से डबा भितर भर्ती करी आनिथिले सर जी तदंत हबो एमान को लिंक रे कोन छथि वर्तमान आरंभ होला तदंत प्रक्रिया सरिया पर मु आपनको जणैबी निहाती भाବରେ 1.5 लाख टंका रे बे एनडीओ को जितेबाला जबत कराई बहुरूपी एनडीओ को जबत कराई परवर्ती मुहूर्त में तदंत चली विशेषकर एनडीओ को सेमाने कहा पाखु आनिले क्या बिक्री करते एमान लिंक रे आउ क्यों मैंने ताकू नहीं तदंत करुच्ची वन विभाग। भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया। कटक रे पुणी जबरदखल उच्छेद बिडानासी नुआसाही पेटानाल कड़े उच्छेद उच्छेद समय चापा उत्तेजना देखा देइछि नोटिस न करी उच्छेद करा जाउथिबा लोके अभियोग करिसंती। परिस्थिति को नजर रखी 3 प्लाटून फोर्स मुतयन होइछंती। 16 एकर जमी रे बेआईन निर्माण करा जाइथिला जाहाकू उच्छेद करुछंती कटक उन्नयन कर्तृपक्ष। विकृत मूर्ति निर्माण निवृत्त रहिबाकू शिल्पी कारीगर मानक उपदेश देबे पुरीघाट थाना अधिकारी। विकृत गणेश मूर्ति निर्माण प्रसंग में आज राय दैछंती हाईकोर्ट। मूर्ति कारीगरों सह आलोचना करी एपरि मूर्ति निर्माण निवृत्त रहिबाकू थाना अधिकारी परामर्श देबे बोली हाईकोर्ट कहछंती। गणेश पूजा को नहीं कटकर विभिन्न स्थान में कारीगर माने गणेश मूर्ति निर्माण करुछंती। तेबे किछि कारीगर गणेशंकर विकृत मूर्ति करुतिबा अभियोग हेबा परे स्थानीय पुलिस मूर्ति कारीगरों को तागिद करथिला जहां विरोध करी हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले शिल्पी कारीगर। आमे समस्त को रिक्वेस्ट करूछु हमर अभिप्राय नहीं जे आमे का जोर जबरदस्त बंद करनु किंतु अति विकृत मूर्ति गुडा को जो बना होउची ताकू आमे आम जानत रे आमे अलाउ करि परिबु नाही कारण सेटा बहुत लोकंकर भावना को इफेक्ट करछि एवं लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति को रूल आउट मध्य करि हबो नाही। तो तेणुक ए प्रकार जदि कौन मूर्ति आपण मैंने निर्माण कर योजना रखिंट पैंडाल बसैबार योजना रखिंट ताठू निवृत्त रहतु। राज्यव्यापी आज ओटीईटी परीक्षा होता बेले मालकानगिरी जिले में प्रश्नपत्र उत्तर सीट वायरल होईछि एवं प्रश्नपत्र सह उत्तर सीट मध्य मेल खाउछि। परीक्षा न हेउणु उत्तरपत्र वायरल हेबा परे चिंतार पड़ जाइछंती परीक्षार्थी। ओटीईटी परीक्षा पाई किछि परीक्षार्थी 5000 टंका लेखाए लांच देइथिबा मध्य चर्चा हेउछि। मालकानगिरी 3टी सेंटर रे परीक्षा होता बेले उत्तरपत्र वायरल हेबा संबंध में मालकानगिरी डीईओ को पचारिबारु से तदंत करी कार्यानुष्ठान नेबे बोली प्रकाश करिसंती। किसी भल पढ़ी किसी कष्ट टिके पढ़ी भीतर परीक्षा दउथलो बाहर आंसर शीट बुलुतला आंसर शीट लीक हो जाई कोन तब केम देखछ सेटा मो तो कन्फर्म जाय ना सर हमको तो गणित छाड़ी देइछु गणित केते कष्ट लागुछि केते परिवेशटा सोशल सेंटर ये सहज होतला। क्वेश्चन पेपर लेगे हेले तो बहुत असुविधा काहे कि आमे एते कष्ट करि कि माने पाठ पढि के एठी ओटीटी कंप्लीट करिया पे चेष्टा करछु तो एटा लेग हला बहुत दुखद घटना ना समिति किछि मो नॉलेज को आसीनी वर्तमान ऑब्जर्वर मान अछंती से माने देखुचंती जदी किछि आसे समिति ताला में तापर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करी जो इंटरनल चेकिंग होची तापर गेट चेकिंग होची इंटरनल चेकिंग होची समिति किछि मो नॉलेज को आसीनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 45तम एजीएम रे चेयरमैन मुकेश अंबानी को बड़ घोषणा। दीपावली सुधा देशर 4 मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता रे जोगाई दिया जिवो 5G जियो 5G ट्रू सेवा। एथिसह 2023 डिसेंबर सुधा देशर प्रतिटी गाँ गहली रे 5G सेवा पाइबे लोके। एथिपाई खर्च हेबो 2 लाख कोटी टंका। जियो एबे नंबर 1 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। एबे 421 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड संजोग होईछि। प्रति 3टी घर मध्यरु 2टी रे जियो फाइबर कनेक्शन अच्छी। केवल जियो प्रदान करुच्ची 5G स्टैंड एलोन सर्विस। तेणु जियो 5G होइजिबो ट्रू 5G। विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करिबो जियो 5G। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा रे हेबो 5G रो व्यवहार। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड रे टॉप 10 रे शामिल हेबो देश एवं 5G जरिया रे स्मार्ट सेशंस लॉन्च करबा को योजना रहिछि। सेपरि क्लाउड आधारित पीसी सर्विस लॉन्च करिबो जियो। क्लाउड पीसी जरिया रे छोट कंपनी ऊपर फोकस रहिबो। इन हाउस पीसी को रिप्लेस करुछि क्लाउड पीसी। मुंबई रे खूब शीघ्र खोलिबो जियो एक्सपीरियंस सेंटर। वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम ऊपर भरोसा अछि। सस्ता 5G स्मार्टफोन पाई गूगल सह काम भी चलीछि। एथिसह क्वालकॉम सह चुक्ति करिछि जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज रो साधारण परिषद बैठक रे चेयरमैन मुकेश अंबानी कहिथिले कोरोना को सफलतार सह सामना करिथिबा आरआईएल देशर विकास पाई बड़ योगदान देबाको प्रस्तुत अछि।
आगामी 25 वर्षर विजन रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ देशर ए अमृत काल रे रिलायंस तार योगदान देबाकू प्रस्तुत अछि 1,88,012 कोटी टिकस दे देशर सबुठारु बड़ करदाता होइछि रिलायंस। सेपरि रिलायंस 2,32,000 नुआ नियुक्ति भी सृष्टि करिछि। रिलायंस इंडस्ट्रीज रो साधारण परिषद बैठक रे रिलायंस इंडस्ट्रीज रो 45तम एजीएम रे चेयरमैन मुकेश अंबानी बड़ उद्बोधन दैछंती। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. Over the past year, Jio has further consolidated its position as India's #1 digital services provider. Today we have 421 million mobile broadband subscribers on our 4G network, and they consume on average nearly 20 gigabits of broadband data every month, which is nearly double their consumption from the year before. Inspired by a dynamic Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji's Digital India initiative, our country has seen the emergence and scale up of multiple world-class national platforms which have brought enormous benefits and ease of living to ordinary citizens, like Aadhaar, a common national identity for 1.3 billion Indians, like Jan Dhan, a self-service bank account that has brought financial inclusion to over 460 million unbanked Indians, especially women, like RuPay, an indigenous payment card network with over 630 million card holders, and like UPI, one of the most accessible digital payment system with a monthly volume of over 6 billion transactions, like Ayushman Bharat, providing health coverage to over 500 million Indians. Another example is our Prime Minister's path-breaking Startup India initiative, under which India has launched over 73,000 new startups in the last 6 years. They have collectively attracted nearly $63 billion of investment and contributed to the creation of lakhs of new employment opportunities. And we have the example of how India has used digital connectivity and digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. An even more exciting possibility of Jio 5G is ultra-high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra high speed internet using true 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra-high-speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future
with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, but multiple video streams showing multiple camera angles at the same time live. That too in ultra high definition. And we can dynamically choose which camera angle we want to focus on while having a preview of multiple other live video streams simultaneously. झारखंडर दुमकारे 17 वर्षीय अंकितांकर अंतिम संस्कार संपन्न होईछि। 5 दिन पर्यंत जीवन सह युद्ध करुथिबा अंकितांकर मृत्यु शनिवार विलंबित राति होई जाईछि। रांची रिम्स रे शेष निश्वास त्याग करिसेंति। तांको मृत्यु खबर मिलिबा परे दुमका अंचल रे लोकमाने रास्ता को ओह्लाइछंति। तांको न्याय दाबी रे रास्ता अवरोध करबा सह टायर जळाइछंति। पुलिस पक्षरु मध्ये सुरक्षा दृष्टिरु अतिरिक्त फोर्स मुतयन करा जाईछि। सकाळ पुलिस फोर्स उपस्थिति रे अंकितांको अंतिम संस्कार करा जाईछि। विपुल संख्यार हिंदू संगठन लोक माने ए अंतिम यात्रा रे शामिल होइथिले। गतकाली सकाळे तांको मृत्यु खबर मिलिबा परे दुमका अंचल रे निया जळिथिला। दुकान बाजार बंद हेबा सह रास्ता घाट रे लोक माने आंदोलन करिसंति। अनेक हिंदू संगठन रास्ता रे पोड़ा जळा करी अभियुक्त को गिरफ दाबी करिसंति। दुमका नगर थाना अंचल जरुबाडीही महल्ला रे रहुतिबा शाहरुख अंकितांको उपरे पेट्रोल पकाई जीवंता जाली देथिला। तेबे शाहरुख 2 वर्ष हेबो अंकितांको एक तरफा प्रेम करुथिले। बारंबार प्रेम निवेदन करुथिले। फोन करी मध्ये हैरान करुथिले। 23 अगस्त अंकिता दुमकार जरुबाडीही महल्ला रे निज घरे सोइथिले। प्राय भोर 5टा समय रे पड़ोसी शाहरुख झरका पटे पेट्रोल ढाली निया लगा देथिला। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा देखते। सेपटे अंकितांको मृत्यु पर दुमका रे उत्तेजना देखा देइछि। स्थिति को देखि प्रशासन पक्षरु 144 धारा जारी करा जाइछि। हिंदू संगठन पक्षरु दुमका बंद डाकरा दिया जाइछि। अब तो इसमें जो भी मामला है हम लोग उसको कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे। अपने जो भी साक्ष्य हमको मिला है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका जैसा बड़ी पदाधिकारी का आदेश भी इसमें हो चुका है, इसका त्वरित विचारण होना है और इसको हम लोग एक पखवाड़े के अंदर आरोपी पक्ष जो है वो अभी भी जो परिजन हैं या फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों को धमका रहा है। इस तरह की सूचना भी आ रही है। आप लोग किस तरह से? ऐसा कोई संज्ञान में अभी तो बात नहीं आई है। वो सारी चीजों को हम लोग मॉनिटर सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी फोर्स का डिप्यूटेशन वो लगातार रहेगा भी और वैसे कुछ प्रकार के कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी। जो अंत्येष्टि हो गई है और जो कार्रवाई हम लोग को करना है वो आगे जो है इनके साथ में जो कंपनसेशन हुआ चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना हुआ तो ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। धारा 144 पे प्रभावित की गई है? जी 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 जी। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफ़ी आक्रोश देखा गया और आज दुमका के बेदिया घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इसको लेकर कल से ही दुमका में तनावपूर्ण माहौल रहा था। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो शहर का इलाका है सभी इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हम इस वक्त मौजूद है दुमका के सिंधिया चौक पर। हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जहाँ तक देखेंगे ये दुकानें बंद दिखेगी। जो हिंदू सामाजिक संगठन के लोग हैं कल उन्होंने आह्वान किया था कि आज दुमका बंद रहेगा और इसी को लेकर जो है दुमका के प्रमुख सड़क पर जितने भी दुकानें आपको दिख रही हैं सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के द्वारा भी जो सुरक्षा को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती की गई है, बाकायदा जो है चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह से अंकिता के साथ जिस तरह की दुर्घटना हुई है या जिस तरह से ये हुआ शिकार हुई है वो उसको न्याय दिलाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दुमका में कल से ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। कहीं पर भी जो एकत्र होकर 5 लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं और किसी तरह की रैली और जुलूस पर भी रोक लगी हुई है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।
बहु प्रतीक्षार अंत माटी रे मिसला नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर अपराह्न 2:30 रे मात्र 7 सेकेंड रे ध्वंस हो गला दैत्य अट्टालिका 3700 किलोमीटर विस्फोरक उड़ाई दिगला पूरा अट्टालिका ब्लास्ट हेबा परे 10 रु 15 मिनिट जाए धुआंमय परिवेश होइतला संपृक्त अंचल 200 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उड़ीथिला धूली धूलीमय हो जाइतला स्थानीय घरद्वार पार्क एवं एक्सप्रेस वे विस्फोरण बेले कंक्रीट रु जो धूली उड़िला ताहा द्वारा स्थानीय अंचल रे वायु प्रदूषण होइछि 30 मिनिट पर्यंत अनुभूत होइतला कंपन बा भाइब्रेशन ब्लास्ट साइट ठारू 1 किलोमीटर पर्यंत पड़ितला प्रभाव 3 घंटा पर्यंत आखपाख अंचलवासी निश्वास नेबारे समस्या होइतिबा कुआ जाउछि। राजधानी अभावन घटना बैग भितर शिशुर मृतदेह नेउ जाउथिले बापा भुवनेश्वर खंडगिरी छकरे उत्तेजना सत्यनगर श्मशान को पठाइला पुलिस। राजधानी अभावन घटना बैग भितर शिशुर मृतदेह नहीं जाउथिले बापा भुवनेश्वर खंडगिरी छकरे उत्तेजना सत्यनगर श्मशान को पुलिस पठाइला। बहुचर्चित जाजपुर पिहू निखोज घटना 2 वर्ष पर भी मिलनी कुनी झीर पता पुलिस भी खोजुनी राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा कमिशन को भेटिले पिहूर मां सीबीआई तदंत दाबी कमिशन कहिले मुख्यमंत्री को जणाइबे। पुरी जेल दुर्दांत अपराधी उपरे मरणांतक आक्रमण हार्डकोर अपराधी पप्पू बराड़ार तंटिकाटी हत्या उद्यम अभियोग गुरुतर अवस्था पुरी डाक्तरखाना भर्ती गत सप्ताह गिरफ होइतिला पप्पू। महिला एसआई स्वागतिका बेहेरा आत्महत्या नहीं तनाखना जिला पुलिस मुख्यालय को बदलिले घु उदयगिरी आईआईसी रेवती सबर सेपटे आईआईसी रेवती बहिष्कार सह गिरफ दाबी बीडीओ प्रतिश्रुति पर खोर्धा निराकारपुर पंचायत ऑफिस आगे उठिला मृतदेह हटिला धारणा। राजधानी अलिया को दारुठेंग बासिंदा रेड सिग्नाल 2 सप्ताह पर भी फिटुनी समाधान बाट निज जिद अटल अच्छा ग्रामवासी कहले कौन परिस्थिति डंपिंग यार्ड कराई दिया नहीं आज पुणी बस बैठक समाधान नहीं नगर उन्नयन मंत्री आशावादी। दुमकार अंकिता अश्रुल विदाय पुलिस उपस्थिति में अंतिम संस्कार संपन्न अभियुक्त को फांसी देवाकू हिंदू संगठन दाबी राजरास्तार उत्तेजना 144 धारा जारी पेट्रोल ढाली निया लगाई देथिला जलाल। संपूर्ण खबर को आसिबा रिलायंस तरफ बड़ घोषणा आगकू लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश अंबानी ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम रे एने घोषणा करिसेंती चेयरमैन मुकेश अंबानी। जियो रिटेल और न्यू एनर्जी व्यवस्था रे लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश अंबानी ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। जियो लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश सेहीपरि ईशा अंबानी रिटेल व्यवस्था रे लीडरशिप रोल नजर आसबे सेहीपरि अनंत अंबानी न्यू एनर्जी व्यवस्था लीडरशिप नेबे बोली सूचना दैछन्ती चेयरमैन मुकेश अंबानी। तेबे रिलायंस तरफ बड़ घोषणा करा जायछि आगकू लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश अंबानी ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम रे एने घोषणा करिसेंती चेयरमैन मुकेश अंबानी। जियो रिटेल और न्यू एनर्जी व्यवस्था लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश अंबानी ईशा अंबानी और अनंत अंबानी। जियो लीडरशिप रोल नजर आसबे आकाश अंबानी सेहीपरि ईशा अंबानी रिटेल व्यवस्था लीडरशिप रोल नजर आसबे सेहीपरि अनंत अंबानी न्यू एनर्जी व्यवस्था लीडरशिप नेबे बोली सूचना दैछन्ती चेयरमैन मुकेश अंबानी। Reliance retails physical stores and digital platforms.
रिलायंस इंडस्ट्रीज रो 45तम एजीएम रे चेयरमैन मुकेश अंबानी को बड़ घोषणा दीपावली सुधा देशर 4 मेट्रो सिटी दिल्ली मुंबई चेन्नई एवं कोलकाता रे जोगाई दिया जियो 5G ट्रू सेवा एथिसह 2023 डिसेंबर सुधा देशर प्रतिटी गाँ गहली रे 5G सेवा पाइबे लोके एथिपाई खर्च हेबो 2 लाख कोटी टंका। जियो एबे नंबर 1 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर एबे 421 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड संजोग होईची प्रति 3टी घर मध्यरु 2टी रे जियो फाइबर कनेक्शन रही केवल जियो प्रदान करुची 5G स्टैंड एलोन सर्विस तेणु जियो 5G होई जिवो ट्रू 5G विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करिवो जियो 5G फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेवा रे हेबो 5G व्यवहार फिक्स्ड ब्रॉडबैंड टॉप 10 रे शामिल हेबो देश 5G जरिया रे स्मार्ट सेंसर्स लॉन्च करबा को योजना अछि सेपरी क्लाउड आधारित पीसी सर्विस लॉन्च करिवो जियो क्लाउड पीसी जरिया रे छोटो कंपनी उपरे फोकस रहिबो इन हाउस पीसी को रिप्लेस करूची क्लाउड पीसी मुंबई रे खूब शीघ्र खोलिबो जियो एक्सपीरियंस सेंटर तेबे वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम उपरे भरोसा रही सस्ता 5G स्मार्टफोन पाई गूगल सह काम भी चली या सहित क्वालकॉम सहित चुक्ति करिछि जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज रो साधारण परिषद बैठक रे चेयरमैन मुकेश अंबानी कहिथिले जे कोरोना को सफलतार सहित सामना करिथिबा आरआईएल देशर विकास पाई बड़ योगदान देबाकू प्रस्तुत रही आगामी 25 वर्षर विजन रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ देशर एही अमृत कला रे रिलायंस तार योगदान देबाकू प्रस्तुत अछि 1,88,012 कोटी टिकस देई देशर सबुठारु बड़ करदाता होइछि रिलायंस सेहिपरि रिलायंस 2,32,000 नुआ नियुक्ति मध्य सृष्टि करिछि रिलायंस इंडस्ट्रीज रो साधारण परिषद बैठक रिलायंस इंडस्ट्रीज रो 45तम एजीएम रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ए दिगरे बड़ उद्बोधन देइछंती एवं देशर सबुठारु बड़ कॉर्पोरेट इवेंट। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. Over the past year, Jio has further consolidated its position as India's #1 digital services provider. Today we have 421 million mobile broadband subscribers on our 4G network, and they consume on average nearly 20 gigabits of broadband data every month, which is nearly double their consumption from the year before. Inspired by our dynamic Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji's Digital India initiative, our country has seen the emergence and scale up of multiple world-class national platforms which have brought enormous benefits and ease of living to ordinary citizens, like Aadhaar, a common national identity for 1.3 billion Indians, like Jan Dhan, a self-service bank account that has brought financial inclusion to over 460 million unbanked Indians, especially women, like RuPay, an indigenous payment card network with over 630 million card holders, and like UPI, one of the most accessible digital payment system with a monthly volume of over 6 billion transactions, like Ayushman Bharat, providing health coverage to over 500 million Indians. Another example is our Prime Minister's path-breaking Startup India initiative, under which India has launched over 73,000 new startups in the last 6 years. They have collectively attracted nearly $63 billion of investment and contributed to the creation of lakhs of new employment opportunities. And we have the example of how India has used digital connectivity and digital platforms to stay resilient even during the COVID-19 pandemic. An even more exciting possibility of Jio 5G is
ultra high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra high speed internet using true 5G. And on top of that, because it's an end-to-end wireless solution, there are no wires coming into your home or creating a tangle inside. With such a simple process, literally hundreds of millions of homes and offices can be connected to ultra high speed broadband, that too in a very short period of time. And India can once again be in the top 10 nations even for fixed broadband. And the two-way interactivity enabled by Jio Air Fiber can create completely new and highly engaging experiences for the entire family, like interactive live content, cloud gaming, immersive shopping, and much more, with focus on continuously enhancing customer experience and privacy. For example, Reliance and Jio are bringing some of the best sporting events like IPL to viewers in India and abroad through our digital platforms. Let's take a look at how we might watch an interactive live IPL match in the very near future with Jio Air Fiber on a large screen. Instead of a traditional broadcast experience, the big difference you can see is that because of gigabit speeds of Jio Air Fiber, we can now deliver not just one video stream, but multiple video streams showing multiple camera angles at the same time live. That too in ultra high definition. And we can dynamically choose which camera angle we want to focus on while having a preview of multiple other live video streams simultaneously. परवर्ती खबर को आसवा राजधानी रे अभावनीय घटना मृत शिशु को बैग रे नेउथिला बापा देह खराब थिबारु हॉस्पिटल रे भर्ती करथिले डाक्टर मृत घोषणा करिबा परे बैग रे नेउथबा परे लोके धरिले शिशु कन्यार बयस 8 मास कैपिटल हॉस्पिटल रे डाक्टर मृत घोषणा कले परे शिशु कन्या को नै एक बैग रे नेउथबा परे खंडगिरी चक्करे किछि लोक माड मारिले परे खंडगिरी थाना हस्तक्षेप करी मृत शिशु कन्या को सत्यनगर श्मशान को पठाई दैछि। रात्र खाइला पिला खेलला बुल्ला सब है सकाले भी खेलला बुल्ला खाया देलु खाइला 9:30 पूरा कौन है माने नाकरो ब्लड काढ़ला नाल जा ये ये आणलु 6 नंबर आणलु देखल ना डॉक्टर कहला धरी आसले ऑटो धरी आसलु धरी आसले बेले जो मोर सरीगला। हाँ से गिरफ खाली खाली तो बाड़े मो मत तो बाड़े बाड़े मो पुओ तो बाड़े आगे मु तो सब थाना रे मु गली आगे मत थाना खाली नहीं जाओ मत थाना नहीं जाओ मु थाना वाला जा कह सबुदा मोर सबुदा अप्रूव होची बेग रे पिल्ला को धरी आस्तुले कोडे नई तर रहिथा नई तर कोडे पोती देबे धरी जिबे से कथा भाबी गिरी धरी आस्तिले खंडेगिरी छकर केती नको धरी गिरी पुओ को मो स्वामी के बाड़ेले काहे की बाड़ेले काहे की बेग रे कोंडा पिल्ला संकी चिपीरी मारी देइछु ताकू मां को डाकिली अम्माण देली कहला मेडिकल सर्टिफिकेट आण ता जन्म सर्टिफिकेट आण सब आण पुलिस इन्फॉर्म करछि कहि करी मो स्वामी की आंठाइले मु कहली आंठांडी करन मो पूर्व धरि आउछि तमे खंडेगिरी थाना जियो मु भी हेले खंडेगिरी थाना जियो मु साक्षी देबी अपन थाना रे हां मु सब एफआईआर देली आ जदी चाहिबे जति ताके जदी स्वामी स्त्री जदी जानि पाउन सेइडे जति अछति ताके दी पचारले बेले साक्षी देई पारिबे। परिवार अदालत परिसर में हाई ड्रामा कृषि अधिकारी को पिटिले स्त्री और सहयोगी बालेश्वर जिला परिवार अदालत परिसर आसी अभियोग कृषि अफिसर सिद्धार्थ स्वरूप जेना तांको स्त्री विरोध में एक छाड़पत्र केस फाइल करिसेंती एने आज उभयंकर काउंसलिंग रहितला हेले हठात कोनोसी कारणवशतः उभय पक्ष मध्य जोरे मारपीट एवं प्रबल पाटितुंड हेउतबार देखा मिलता एने सिद्धार्थ स्वरूप को कहवा अनुसार से स्त्री विरोध में छाड़पत्र फाइल करिबारु स्त्री एवं किछि संपर्कीय तांको उपर आक्रमण करिसेंती तेबे तांको स्त्री एने कोनोसी प्रतिक्रिया देइ नथिबा बेले थाना रे ए जाय कोनोसी मामला होइनी। एठी आज काउंसलिंग थिला जज को पाखरे काउंसलिंग परे परे मु बाहरला परे मो स्त्री आस की 2-4 गुंडा धरि की मते मारपीट कला कोन काउंसलिंग को फैमिली कोर्ट डिवोर्स केस रे काउंसलिंग थिला पाखरे
तो जस्ट आम बाहरला से 2-3टा लोक को धरिकी आसला से गेट सामने ही बहुत बाड़ेला मो आखि को चिरी देछि चश्मा भांगी देछि इयरफोन चेंडी देछि आ धमक देछि कि बाड़े बोली जेहेतु मु डिवोर्स केस कली से आगरे से राजधानी अलिया अड़ुआ फिटुनी समाधान बाट रास्तार पड़ रही कूड़ कूड़ अलिया टेंशन बीएमसी दारुठेंग अलिया पड़ब कि नहीं बायो माइनिंग प्लांट हेब कि नहीं कौन निष्पत्ति नेबे दारुठेंग बासिंदा अलिया अड़ुआ को नहीं आज दारुठेंग बसिब ग्राम सभा दारुठेंग सरपंच समिति सभ्य वार्ड मेंबर गाँव मुरब्बी आलोचना कर शेष निष्पत्ति नेबे शनिवार दारुठेंग ग्रामवासी बीएमसी कर्तृपक्ष आलोचना कर बैठक में ग्रामवासी 2 दिनर मोहलत नहीं तेबे निज जिद्रे अटल अच्छा स्थानीय लोके कोनोसी परिस्थिति रे दारुठेंगरे डंपिंग यार्ड कराई दिया जिवो नाही बोली चेतावनी दैछंती अन्यपटे गाँ लोकंको दुर्दशा कहिले न सरे डंपिंग यार्ड बंद जोगु माळ माळ कुकुर एबे गाँ मुहा कुकुर काहाकू कामुडिलेनी तो काहा घरे पसिलेनी जाहाकू नै ग्रामवासी एबे भयभीत सेपटे दारुठेंग ग्रामवासींको प्रथम बैठकरू कोनोसी निष्पत्ति बाहरी पारि नाही आज संध्यारे पुणी बसिबो ग्रामवासींको बैठक गतकाली संध्यारे बसिथिला ग्रामवासींको बैठक रे ग्रामवासींको निष्पत्ति कोनोसी परिस्थिति रे दारुठेंगरे अलिया पकाई देबु नाही तो गोटे पर गोटे टाइम नौकर आसिक पुणी से अलिया पकाउछंती एटी बहुत असुविधार सम्मुखीन आम होचु रोग व्याधि पड़ुचु एक्सीडेंट रे हमर लोक सब मरुचंती हजार हजार गोरु गाई मरुचु से अलिया गाड़ी रे धक्का आईकी तार ग्यारंटी किए नब जे बीएमसी कहूची आउ हेटे पकेइबनी आपणकर अलिया सकाशे आम गाँव में बुला कुकुर 500-700 कुकुर आज्ञा तापर चर्म रोग कैंसर रे बहुत लोक मले आउ केते ये बीएमसी कमिशनर हूँ कि ओडिशा सरकार हूँ केबे सचेतन केबे हेबे आमे कोन मनुष्य नुहे आमे कोन आपण मानू वोट दे जितौनु जेतु बड़ मनुष्यकर इम्यूनिटी पावर अछि तांकर किछि होउनी छोट पिला मानकर कुंडी कंडी होउछि गाय गोरु प्रबल नष्ट पानी भी खराब हेलानी पानी रे लेयर सब नष्ट हेलानी ठस निष्पत्ति हो माने तो संपूर्ण आमे एठी अलिया पकई दबुनी बोली हमर जनमत विरोध कर जहाँ फल समस्त मुखिया लोक दायित्व नहीं यार कौन प्रतिकार करा आज संध्या बेले बसिले सब आलोचना हम आलोचना है जहाँ निष्पत्ति मिले सेपटे दारुठेंग डंपिंग यार्ड विवाद मामलें नगर उन्नयन मंत्री उषा देवी प्रतिक्रिया रखिंट प्रसंग को नहीं मेयर और कमिशनर आलोचना करुंच ग्रामवासी को बुझा चली आशा रही 2-3 दिन भितर समस्यार समाधान हो सहित बायो माइनिंग प्लांट उपर विचार करा मंत्री कहते कमिश्नर मेयर भी से व्यस्त अच्छा भी गोटे आम भी चेष्टा कर गोटे कहले गोटे समाधान पहुँचवा लगी आईटा तो देखू जहाँ 2-3 दिन भितर मु भावुची आग्रह भी हो पारे जहाँ गोटे समाधान पॉइंट को आसो से कथा बुझुचु देखा कौन हम केते शीघ्र समाधान होले आशा रखिरा बाकी 2-3 दिन भीतर हे जीवन ए दिन सेठी ओलिया पडियो ना कमिशनिंग करी कोन करिया व्यवस्था करा जो बाय माइनिंग प्लांट देखो सेटा पई भी कथा चली से देख बाय माइनिंग प्लांट से जो प्लांट हवा पई कोन असुविधा होची काहे कि विलंब होची आया से प्लांट हवा पई काहे विलंब होची नहीं विलंब होची बोले तार किसी ये अच्छी तेरा सब समाधान न हेले गोटे प्लांट खोली दबाटा ठीक हबनी एणुक चली तो आम जारी रखीचु आम डिस्कसन सब आमती गोटे समाधान रास्ता खोलू से आशा अछि खूब शीघ्र समाधान बहु प्रतीक्षार अंत माटी रे मिसला नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर अपराह्न 2:30 मात्र 7 सेकेंड रे ध्वंस हो गला दैत्य अट्टालिका 3700 किलोमीटर विस्फोरक उड़ाई दिगला पूरा अट्टालिका ब्लास्ट हेबा परे 10 रु 15 मिनिट जाए धुआंमय परिवेश होइतला संपृक्त अंचल 200 मीटर रु अधिक उच्च पर्यंत उड़ीथिला धूली धूलीमय हो जाइतला स्थानीय घरद्वार पार्क एवं एक्सप्रेस वे विस्फोरण बेले कंक्रीट रु जो धूली उड़िला ताहा द्वारा स्थानीय अंचल रे वायु प्रदूषण होइछि 30 मिनिट पर्यंत अनुभूत होइतला कंपन बा भाइब्रेशन ब्लास्ट साइट ठारू 1 किलोमीटर पर्यंत पड़ितला प्रभाव 3 घंटा पर्यंत आखपाख अंचलवासी निश्वास नेबारे समस्या होइतिबा कुआ जाउछि
राष्ट्रीय कांग्रेस पाइब नुआ अध्यक्ष अक्टोबर 17 रे हेबो एआईसीसी अध्यक्ष पई निर्वाचन अक्टोबर 19 रे हेबो भोट गणति रविवार बसिथिबा कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी सीडब्ल्यूसी बैठक रे एने निष्पत्ति होईछि निर्वाचन पई सेप्टेम्बर 24 रु सेप्टेम्बर 30 मध्य रे नामांकन समय धार्य होईछि अक्टोबर 1 रे हेबो जांच अक्टोबर 8 रे हेबो प्रार्थीपत्र प्रत्याहार सेहि बळी सीडब्ल्यूसी बैठक रे महंगाई विरोध झारखंड दुमका 17 वर्षीय अंकिता अंतिम संस्कार संपन्न होइछि 5 दिन पर्यंत जीवन सहित युद्ध करुवा अंकिता मृत्यु शनिवार विलंबित राति होइछि रांचीर रिम्स रे से शेष निश्वास त्याग करिसेंति मृत्यु खबर मिलवा पर दुमका अंचल लोक माने रास्ता को ओह्लाइथिले न्याय देबारे रास्ता अवरोध करा सहित टायर जलाइछंती पुलिस पक्षरु सुरक्षा दृष्टि अतिरिक्त फोर्स मुतयन करा जायछि सकाळु पुलिस फोर्स उपस्थित रे अंकितांकर अंतिम संस्कार करा जायछि विपुल संख्यार हिंदू संगठन लोक माने एही अंतिम यात्रा रे शामिल होइथिले गतकाली सकाळे तांकर मृत्यु खबर मिलवा परे दुमका अंचल रे निया जलिथिला दुकान बजार बंद हेबा सहित रास्ता घाट रे लोक माने आंदोलन करिसेंती अनेक हिंदू संगठन रास्ता रे पोड़ा जला करी अभियुक्तों को गिरफ पई दाबी करिसेंती दुमका नगर थाना अंचल जरुकाडीहे महला रे रहुतबा शाहरुख अंकिता उपरे पेट्रोल पकाई जीवंता जलाई देथिला तेबे शाहरुख 2 वर्ष हेबा अंकिता एक तरफा प्रेम करुथिले बारंबार प्रेम निवेदन करुथिला फोन करी मध्य हैरान करुथिला 23 अगस्त रे अंकिता दुमकारे निजर घरे सोइथिले प्राय भोर 5टा समय पड़ोसी शाहरुख हुसैन झरका पटे पेट्रोल ढाली निया लगाई देथिला मृत्यु पूर्व कौन कहिथिले अंकिता आसंतु सुनिबा उसका भाई क्या बोलता है उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के अच्छा ऐसा धमकी देता है हाँ धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा देखते सेपटे अंकिता मृत्यु पर दुमका उत्तेजना प्रकाश पाई स्थिति को देखि प्रशासन पक्षरु 144 धारा जारी करा जायछि हिंदू संगठन पक्षरु दुमका बंद डाकरा दिया जायछि अब तो इसमें जो भी मामला है हम लोग उसको कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे अपने जो भी साक्ष्य हमको मिला है उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका जैसा बड़ी पदाधिकारी का आदेश भी इसमें हो चुका है इसका त्वरित विचारण होना है और इसको हम लोग एक पखवाड़े के अंदर आरोपी पक्ष जो है वो अभी भी जो परिजन हैं या फिर जो पीड़िता है उनके परिजनों को धमका रहा है इस तरह की सूचना भी आ रही है आप लोग किस तरह से ऐसा कोई संज्ञान में अभी तो बात नहीं आई है वो सारी चीजों को हम लोग मॉनिटर सुरक्षा के लिए बिल्कुल पर्याप्त तो वहाँ पे हम लोगों ने अभी फोर्स का डिप्यूटेशन वो लगातार रहेगा भी और वैसे कुछ प्रकार के कोई साक्ष्य मिलता है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई उस पर की जाएगी जो अंत्येष्टि हो गई है और जो कार्रवाई हम लोग को करना है वो आगे जो है इनके साथ में जो कंपनसेशन हुआ चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना हुआ तो ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं थैंक यू सर धारा 144 पे प्रभावित की गई है जी 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 कोरापुट केन्द्रीय विश्वविद्यालयर 14तम प्रतिष्ठा दिवस जोगदेले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ए अवसर में कोरापुटर सुपर फूड को अंतरराष्ट्रीय स्तर को नेबारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहयोगी हेउ बोली केन्द्रमंत्री कहते कोरापुटर जैविक चाष प्रणाली में उत्पादित धान आंब मांडिया पनीपरिबा कॉफी स्वतंत्र तेबे प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे मांडियारू प्रस्तुत बिस्कुट को विश्व बजार में पहुंचाइबाको हेबो बोली धर्मेन्द्र कहते जनजाति को तांको भाषा रे शिक्षा दियागले सेमानक प्राथमिक शिक्षा विकास रे अभिवृद्धि हेबो एथिसह दारिद्रता को दूर करिबार एकमात्र चाबिकाठी हेउछि शिक्षा शिक्षार सदुपयोग करिबा पई प्रधानमंत्री मोदी जातीय शिक्षा नीतिर कल्पना करिसेंति अपार संभावनार अंचलर कोरापुट को विनिर्माण क्षेत्रर पेंठस्थली करिबा समस्तक लक्ष्य सामान्य लोकंक टिकस रे देशर शिक्षानुष्ठान चालुछि आमर दायित्व हेउछि शिक्षा माध्यम रे साधारण लोकंकु टिकसर उचित प्राप्य देबा परिश्रम पराकाष्ठा पुरुषार्थ बल रे निष्पेषित लोकंक दायित्व नेबा
स्वर्गद्वार शोइथिबा बेले मोबाइल लुट सीसीटीवी रे कैद हैला वीडियो गत अगस्ट 27 तारिख रे घटना घटिथिबा बेले आसीची मोबाइल चोरी समर सीसीटीवी फुटेज आउ ए हेउची सही वीडियो। सूचना अनुसार गोप अंचल सरजू बेहेरा नामक जड़े व्यक्ति स्वर्गद्वार में विश्राम स्थान में शोइथिले। किछि समय परे तांको पछ पकेटे रखिथिबा मोबाइल को केही नै जाइथिबा जानिबाकु पाइथिले। ए नै से स्वर्गद्वार सेवा केंद्र ऑफिस रे जणाइबा परे सेवक माने स्वर्गद्वार रे लागिथिबा सीसीटीवी फुटेज को जांच करथिले, जेउथरे जड़े व्यक्ति तांको पछ पकेट को ब्लेड रे काटी मोबाइल नै जाउथबार देखिबाक मिलिछि। यहाँ पर व्यक्ति जनक अन्य जड़े व्यक्ति सहित स्वर्गद्वार बाहर थिबा गाड़ी को चोरी करबा पई चेष्टा करथिले, तेबे एथिरे विफल होइथिले। पूर्वरु स्वर्गद्वार रे मोबाइल एवं बाइक चोरी हेउथिबा अभियोग होइथिला। बौद्ध मनमुंडा पुलिस हाथ में लुटेरा ग्यांग जड़े नाबालक समेत 4 गिरफ होइछंती। गिरफ 4 अभियुक्त होइछंती देउलीर सोनू माझी, नुरपा ग्रामर संबारू महामल्लिक, संजीत बेहेरा और पिंटू, दहिया ग्रामर आलोक साहू। गिरफ 4 अभियुक्त को कोर्ट चालान करा जायछि। सेहिपरि जड़े नाबालक को जुवेनाइल कोर्ट रे हाजर करा जायछि। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करी पुलिस 4 अभियुक्त को गिरफ करिछि। सेमानकठारु पुलिस 2टी बाइक 3टी मोबाइल फोन जब्त करिछि। बौद्ध जिला मनमुंडा थाना अंचलरू बाइक एवं मोबाइल लुट हेउथिबार अभियोग होइथिला। एनै थाना रे लिखित अभियोग हेबा परे पुलिस पक्षरु 2टी टीम गठन करा जाई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करा जाई लुटेरा को गिरफ करिछि पुलिस। बहुरूपी एंडुओ चोरा चालाण राकेटर पर्दाफाश। बहुरूपी एंडुओ बिक्री डील बेले धरा पड़िले माफिया। 1.5 लाख बिक्री उद्यम बेले 2 जन को धरिला वन विभाग। गिरफ 2 अभियुक्त हेले जगतसिंहपुर तीर्तोल क्षीरोद महांती, रश्मि रंजन दास। भुवनेश्वर सिटी फॉरेस्ट कब्जा 2 माफिया थिबा बेले राज्य बाहर को चोरा चालाण उद्यम करा जायतिला। वन विभाग सूचना अनुसार 2 अभियुक्त जटणीर जड़े व्यक्ति बहुरूपी एंडुओ आनिथिले, तेबे काहा पाखरु आनिथिले ओ काहाकु बिकी थांते से नै तदंत चलिछि। जेल भितर दुर्दांत अपराधी को मरणांतक आक्रमण अभियोग। गुरुतर अवस्था डाक्तरखाना को स्थानांतर। पुरीर हार्डकोर अपराधी पप्पू बराल को पुरी जेल रे मरणांतक आक्रमण होइछि। जेल भितर धारुआ अस्त्र रे पप्पूर तंटी काटी हत्या उद्यम करा जायछि। रक्त जुडुबुडु अवस्था गुरुतर पप्पू बराल को पुरी सदर मुख्य चिकित्सालय सर्जरी वार्ड रे भर्ती करा जाई चिकित्सा चलिछि। तेबे काहीकि एवं केउ परिस्थिति रे पप्पू भली जने हार्डकोर अपराधी उपरे मरणांतक आक्रमण हैला एवं एथिरे किए संपृक्त तार तदंत चलिथिबा पुरी जेल सुपरिटेंडेंट सूचना दैछंती। गत सप्ताह पुरी समुद्रकूल थाना पुलिस अभियुक्त पप्पू बराल को विभिन्न मामला रे गिरफ्त करथिला। पप्पू नारे एकाधिक संगीन आपराधिक मामला रहिछि। कटक रे पुणी जबरदखल उच्छेद। बेडारासी नुआसाही पेटानाळ कड़े ए वाराणसी रे गंगा नदी जलस्तर वृद्धि पर स्थानीय अंचल में नाही नथिबा समस्या सृष्टि होइछि। स्थिति एभली होइछि जे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भितर पसि जाइछि पानी, फल श्रद्धालु और स्थानीय लोके नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। किभली रहिछि सेठाकर परिवेश सेने ग्राउंड रु सूचना देउछंती आम न्यूज 18 प्रतिनिधि। आपण देखि पारुछंती सही दृश्य। ये होइछि वाराणसी रे गंगा नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा परे किभली रहिछि वर्तमान सेठाकर स्थिति। आपण देखि पारुछंती किभली वर्तमान समस्या सृष्टि होइछि, लोके किभली असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। वाराणसी रे जल प्रलय सृष्टि होइछि, लोके नाही नथिबा हैरान हेउछंती। विशेष करिकि जो पर्यटक जो श्रद्धालु बाहर आसिछंती सेमानक समस्या बढ़ि जाइछि एवं नदी रे देखिबा कि प्रबल पानी रहिछि, जलस्तर बढ़ि जाइछि एवं एक्सक्लूसिव विजुअल आपण देखि पारुछंती।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर और मैं जरा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो देखिए, जब मैं यहाँ पर एंटर किया हूँ उस वक्त पानी जो गंगा जल था, जो गंगा नदी का जलस्तर था, इतना नहीं था। लगातार ये गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है। दूसरी तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर जो हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है, भगवान हनुमान की, यहाँ पर देखिए वो भी लगातार वहाँ भी जलस्तर पहुँच चुका है, गंगा जल पहुँच चुका है। और जिस तरीके से लगातार जो गंगा नदी का पानी है वो बढ़ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा मणिकर्णिका घाट है वो जलमग्न हो चुका है। नावें यहाँ पर रखी गई हैं, नाव इसलिए क्योंकि जो बॉडी है वो बॉडी मणिकर्णिका घाट तक पहुँच पाए। पहले यहीं पर बॉडी जलाई जाती थी, लेकिन अभी जहां पर हम मौजूद हैं इसके सामने एक ऊंचा स्थान बनाया गया है। जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा, जो ऊंचा स्थान बनाया गया वहां पर बॉडी जलाई जाती है। कहा जाता है कि जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना होता है वो मणिकर्णिका घाट में उन्हें यहाँ पर लाया जाता है, उनके परिजन लाते हैं यहाँ पर, उनके परिजन लाते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। मैं तो तस्वीरें देखिए, हर तरफ गंगा जल ही गंगा जल है। गंगा का पानी जो है, गंगा नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी विकराल रूप वाराणसी में ले चुकी हैं और इसका जो प्रभाव है वो 124 गांवों में वाराणसी में देखा जा सकता है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वाराणसी। गंगा जलस्तर वृद्धि पर वाराणसीर दशमेध घाटरे नाही नथिबा स्थिति, एठारे रहितिबा दुकान बजार बुड़ी जाइतिबा बेले लोके बहु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। एही स्थान रे संध्या आरती करा जाइथाय, तेबे वर्तमान एठारे देखिबाकु मिलिछि जल प्रलय। तो आप देखिपुंट से दृश्य, जितेबाला वाराणसी गंगा नदी में वृद्धि पाउछि जलस्तर, लोक केते हैरान हेउछन्ति, केते असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति एवं जार प्रभाव आखपाख अंचल में देखा मिली। विशेषकर आखपाख कलोनी में पानी पशि जाइछि, ता सहित सेठारे बड़ समस्या मध्य सृष्टि होइछि। एक्सक्लूसिव भिजुआल आप देखुछन्ति एवं रास्ता पार हेबाकू डंगा ही एकमात्र सहारा। एहाकू ध्यान रखी प्रशासन मध्य विभिन्न प्रकार पदक्षेप नउछि। तो सहर में 19 रिलीफ सेंटर खोल जाइछि। तो आम साधारण दिन में देखू किभଳି भाव में केते प्रबल भिड़ जमे। आज आप देखिपुंट ए घाट वर्तमान जल प्रलय देखा मिली। डंगा ही एकमात्र सहारा एवं एठारे जल प्रलय देखा मिली। जो स्थान में संध्या आरती करा जाय थाए, आज जो चित्र आसी सामना को डंगारे लोक माने पार होउछन्ति, काहेकिना जल प्रलय देखा मिली। एक्सक्लूसिव भिजुआल आप देखिपुंट किभଳି स्थिति रही। गंगार जल वृद्धि पर वाराणसी घाटरे देखा कि दशमेध घाटरे नाही नथिबा स्थिति सृष्टि होइछि। एठारे थिबा दुकान बजार बुड़ी जाइछि, लोके बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। देखिबा कि एही घाटरे दशमेध घाटरे लोक मानक श्रद्धालु मानक प्रबल भिड़ जमे। वर्तमान किंतु जो स्थिति आप देखिपुंट जल प्रलय देखा मिली। गंगार जलस्तर वृद्धि पर जल प्रलय दशमेध घाटरे दुकान पानी रे बुड़ी जाइछि। लोके माने अंटे पानी रे जीवा आसिबा करुछन्ति। स्थानीय लोके डंगा ही एकमात्र सहारा रास्ता पार हेबाकू ए चित्र बयान करुछि। आपण भाबंतु ये किभଳି रहिछि सेठाकर स्थिति। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि दशाश्वमेध घाट पर ये दुकानें हुआ करती थी जो अब जलमग्न है। यहाँ तक गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है, गंगा जल जो है, गंगा का पानी जो है यहाँ तक पहुँच गया है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये सीढ़ियां हैं और ये जो सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से होकर नीचे जाते थे। यानी जो गंगा का जो जल स्तर है वो यहाँ पर हमेशा नहीं हुआ करती है। यहाँ से तकरीबन 40 से 45 फीट नीचे गंगा हुआ करती थी और जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ा है, आप देखिए नाव जो है एकदम जहाँ पर सीढ़ी खत्म होती है, नाव यहाँ तक पहुँच गया है।
यहीं पर शाम को गंगा आरती हुआ करती थी, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जिसे श्रद्धालु देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे। यहीं पर वो गंगा आरती इसी घाट पर हुआ करती थी। और ये जो सामने ये सब देख पा रहे हैं आप, ये होटल हैं, यहाँ पर सैलानी आके रुका करते थे। ये सभी होटल डूब चुके हैं, बंद कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ यहाँ पर एक फोटोग्राफर यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से इन लोगों को परेशानियां हो रही है, कैसी परेशानियां हो रही है। क्योंकि देखिए फोटोग्राफर हैं आप और आपका कैमरा आपके साथ है इस वक्त, तो कैसा धंधा पानी चल रहा है आपका, किस तरह बिजनेस कैसा चल रहा है? बस हम लोग का धंधा पानी एकदम ठप है। अभी फिलहाल बोट ये गंगा जी में हम लोग को उतर कर अलाउ भी नहीं है फोटोग्राफी करना। अपने बोट लगा लिए हैं, बोट पर से जो मिल जा रहा है, फिर उसके बाद अपना घर को प्रस्थान करते हैं। बस इससे ज्यादा और क्या किया जाएगा। और प्रशासन भी रोक रखा है हम लोगों को फोटोग्राफी करने के लिए। तो हम लोग मुझे ये बताइए, जो गंगा आरती होती थी कितना दूरी पर होती थी? कम से कम यहाँ से आपको मानिए 25 मीटर आगे। 25 मिनट। ये जो बोट खड़ी है, बोट से भी आगे। हाँ, वो खंबा दिख रहा है ना, वो खंबा, हाँ आखिरी वाला, तिरंगा से भी आगे जो एकदम, हाँ वो जो तिरंगा दिख रहा है, बोट देखिए पीछे एकदम लास्ट तिरंगा दिख रहा है, वहाँ पे आपको गंगा आरती की पूरी लाइनिंग है। वहाँ से समझ लीजिए लगभग 25 मीटर से 30 मीटर की लंबी दूरी है ये। और ये जो सीढ़ियाँ थी, कितनी स्टेयर्स थे यहाँ पे? अरे यहाँ से लेकर पूरा, अब क्या हम लोग इसकी गिनती तो किए नहीं है, लमसम 100 सीढ़ियाँ मान के चलिए, 100 सीढ़ियाँ डूब चुकी है। 100 सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं। और आप हमेशा यहीं रहते हैं? तो हमेशा यहाँ रहते हैं, 12 साल से 13 साल से हम यहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवानंद साहनी। शिवानंद साहनी है ये। और शिवानंद साहनी का ये क्या नाम है कि 100 सीढ़ियाँ डूब चुकी हैं इस गंगा जल में। और गंगा का जो पानी है, जो गंगा का जो जल स्तर है, वो लगातार बढ़ रहा है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी वृद्धि पाउछि जलस्तर, जार प्रभाव आखपाख अंचल देखा मिली। विशेषकर कि आखपाख कॉलोनी रे पानी पशि जावा परे सेठाकर स्थिति देखा कि चिंताजनक रही। सेठारे लोकों पाई सृष्टि होइछि बड़ समस्या। याकू ध्यान में रखी प्रशासन मध्य विभिन्न पदक्षेप नेछि। सहर में 19 रिलीफ सेंटर खोला जाइछि, जोंथिरे 661 परिवार 3432 जन को आश्रय दिया जाइछि। सेपरि उद्धार कार्य पई 58टी डंगा नियोजित करा जाइछि। तो ये जेभଳି भाबरे वाराणसी रे जो स्थिति रही समस्या आउरी बढ़ी जाइछि। गंगा नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि, जार प्रभाव आखपाख अंचल रे किभଳି भाबरे देखा मिलुछि। एक्सक्लूसिव विजुअल आपण देखि पारुछंती। जल प्रलय देखा मिलुछि वाराणसी रे। गंगा नदीर जलस्तर वृद्धि पाइछि, जार प्रभाव आखपाख अंचल रे पानी पशि जाइछि। लोक माने विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होउछंती। लोक माने बाहर को बाहरी परनाती, घर किभଳି भाबरे अधा जाय बुडी जाइछि तार मध्ये आपण चित्र देखि पारुछंती। एवं लोक मानक पई समस्या आहुरी बढ़ी जाइछि। लोके देखिबा कि समानकु रहिचंती आश्रय स्थली रे समाने रहिचंती। प्रशासन पक्षरु अनेक प्रकार पदक्षेप निया जाउछि एवं शहर रे 19 रिलीफ सेंटर खोला जाइछि, जोथिरे कि 3000 रु अधिक लोकंकु सेठारे आश्रय दिया जाइछि। एथि सहित उद्धार कार्य पई 58टी डंगा मध्ये नियोजित करा जाइछि। आपण देखि पारुछंती सही एक्सक्लूसिव विजुअल आमे आपनको न्यूज़ 18 देखाउछु। गंगा नदीर जलस्तर वृद्धि परे वाराणसी रे जल प्रलय। वाराणसी में गंगा नदी के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वरुणा नदी में। हमारे साथ है एनडीआरएफ की टीम और शास्त्री घाट से हम चले हैं एनडीआरएफ की टीम के साथ। दरअसल एनडीआरएफ की टीम इस पूरे एरिया में लगातार मुस्तैद है, क्योंकि वरुणा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाऊं एक बार तो देखिए, आमतौर पर वरुणा नदी का ये जलस्तर नहीं होता है, बहुत कम पानी होती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो कैमरे की नजर जहां भी जाएगी, कैमरे की लेंस के जरिए आप देख पाएंगे, जहां भी कैमरा जाएगा केवल पानी ही पानी आपको दिखेगा। सर, कौन से इलाके में हम लोग जा रहे हैं अभी? हम चौका घाट की तरफ जा रहे हैं और शास्त्री घाट से चौका घाट की तरफ जा रहे हैं। अभी कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया अभी तक? रेस्क्यू हमारी टीमें हर एक स्पॉट पे लगी हुई हैं, 7-8 किलोमीटर के आसपास लगी हुई है। और डेली हमारा करीब 50 से 45 लोगों को रेस्क्यू करते हैं। रोजाना 45 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। देखिए, एक बोट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं। दूसरे बोट पे हमारे कैमरा पर्सन खुद वहाँ उस दूसरे बोट पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से टुकड़ियों में 5-6 किलोमीटर के रेडियस में लगातार एनडीआरएफ के जो अधिकारी, जो जवान जो हैं, वो लगातार मुस्तैद हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सही बोल रहा हूँ सर? सर राइट है, ये आप सही बोल रहे हैं।
अच्छा, मैं ये तस्वीर देख पा रहा हूँ, देखिए ये जो घर है, इन घरों में देख रहा हूँ कि पानी चला गया है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा उधर, उन घरों में पानी गया है वरुणा का, तो यहाँ से भी रेस्क्यू करना पड़ा था। हाँ, यहाँ से बहुत कम ही रेस्क्यू करना पड़ा क्योंकि ये घर जो है नीचे है, थोड़ा इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपरी इलाका जिनके गलियों में पानी नहीं भरा हुआ, इसके और आगे जो है मतलब तटीय इलाका काफ़ी पड़ता है जिससे कि पानी भरा है, गलियों में भी भरा है और शास्त्री घाट से ये कैंट की तरफ भी पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, गलियों में भी। तो जहाँ जहाँ तटीय इलाके, कुछ इलाके तटीय में आए हैं लेकिन उनके घरों के थोड़ा सा आगे जाने पे ऊंची जगह है जिससे कि वो सेफ रास्ते पे अपने निकल जाते हैं। ये सही है सर, अभी तो गांव क्षेत्र के इलाकों में जो हमारे एरिया में आते हैं उनमें रेस्क्यू किया गया था और गंगा के इलाके में अभी हम लोग, हमारी दूसरी टीमें वहाँ पर राहत कार्य सामग्री पहुँचा रहे हैं, काम में लगी है। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाया जा रहा है और पूरी सुरक्षा के साथ हम इस वक्त यहाँ पर है। देखिए तस्वीरें, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, देखिए किस तरीके से ये सब जो घर है वो घर डूबे हुए हैं। लगभग पहली मंजिल पूरी तरीके से डूब चुकी है। देख ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पहली मंजिल पूरी तरीके से डूब चुकी है यहाँ पर। तो इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हाँ, रेस्क्यू अधिकतर कर लिया गया है। जिनका एक ही मंजिल है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनका 2 मंजिल है अभी तक वो ऊपर ही है और अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनको पूरी तरह से मदद किया जाता है। पूरी तरीके से मदद किया जा रहा है प्रशासन के तरफ से यहाँ पर, और राहत शिविर भी यहाँ पर बनाई गई है सरकार के तरफ से। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका भी है, ये भी कोई घाट है, पूरा घेराबंदी की गई है यहाँ पे कि इधर कोई आ नहीं सकता। पूरी सीढ़ियाँ जिस तरीके से है, ये भी घाट है। आज आपने किसी को रेस्क्यू किया सर? सर आज रेस्क्यू किया कैंट इलाके के और पास में जो है 10 लोगों को रेस्क्यू किया है हमने। गंगा के साथ साथ वरुणा भी उफान पर है। दोनों नदियां जो हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस वजह से प्रशासन अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। सेपरी बिहार में गंगा नदी में बन्या विभिन्न स्थान में गंगा नदी विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि। गंगा नदीर तलिया अंचल में पानी पशिबा आरंभ करिछि। फल छपरा, बक्सर, भागलपुर में बन्या जोगु व्यापक क्षयक्षति अनुमान करा जाउछि। विशेषकर फसल नष्ट हेबार आशंका करा जाउछि। छपरा लोकंकु अलर्ट रे रखा जाइछि। नदी कूल रे रहुतबा लोकंक घरे पानी पशुछि। तो दृश्य आप देखिपुंट ये हूँ बिहार रे गंगा नदी में बन्या विभिन्न स्थान में गंगा नदी विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि। लोकंकर समस्या आहुरी बढ़ी जाइछि। लोकंक घरे पानी पशि जाइछि। तो आप देखिपुंट एक्सक्लूसिव विजुअल देखिपुंट बिहार में किभଳି भाबरे जल प्रलय देखा मिली। गंगा नदी में बन्या छपरा, बक्सर, भागलपुर में बन्या जोगु व्यापक क्षयक्षति होइछि। चाष जमी जलमग्न हो जाइछि। लोकंक घरे पानी पशि जाइछि। लोके विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। फसल नष्ट मध्य हो जाइछि। लोकों को अलर्ट रखा जाइछि है और गंगा की बड़ी जलस्तर के कारण वो गंगा पथ पे जो है वो पानी चढ़ चुका है। कृष्णा घाट से लेकर के अगर हम बात करें गांधी घाट, इसके अलावा अदालतगंज घाट, कलेक्ट्रेट घाट, कई ऐसे घाट हैं जो यहाँ पे पूरी तौर से डूब चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरे तौर पे गंगा और गंगा पथ जो है वो एक समांतरण हो चुका है। कई घाट यहाँ पे डूबा हुआ है पूरे तौर पे और इसके बावजूद जो है लोग गंगा में अटखेलियाँ करते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर पहले देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये घाट है, ये कृष्णा घाट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा समानांतर जो है घाट से बह रही है। काफ़ी तेज धारा है। लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप गंगा में ना आएँ, गंगा में अटकलियाँ ना करें। बावजूद इसके लोग देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो भी यहाँ अटकलियाँ करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ बड़े भी जो हैं वो भी इस गंगा में जो है आ जा रहे हैं। इसी डूबे हुए जो गंगा पथ है लबालब भर चुका है। कह सकते हैं कि तकरीबन 4-4.5 फीट ऊपर गंगा जो है यहाँ पे बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। बावजूद इसके ये जो बच्चे हैं, बड़े लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस गंगा पथ पे अभी भी आ जा रहे हैं, अटखलियाँ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये घातक हो सकता है लोगों के लिए और यही वजह है कि लगातार जिला प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? नहा रहे हैं। नहा रहे हैं। मना किया ना प्रशासन, फिर नहा क्यों रहे? नहीं बोले प्रशासन। हाँ? नहीं बोले। डर नहीं लग रहा डूबेगा तो?
नहीं डूबेंगे नहीं डूबेंगे, घेरा है। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही के चलते डूब जाओगे तो क्या करोगे फिर? तैरने आता है, फिर तैर के चल जाएंगे। तैर के चल जाओगे? हाँ, कोई रोक नहीं रहा है तुमको? तो देखिए ये बच्चे जो है किस तरह से यहाँ तैराकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है। जिला प्रशासन भी जो है वो आदेश जारी करके खानापूर्ति कर लिया है, और यही वजह है कि ये जो तस्वीर जो है देखने को मिल रही है गंगा पथ पे कि जो लोग हैं वो इस जलस्तर बढ़े होने के बावजूद गंगा पथ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं, बच्चे तैराकी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह लापरवाही जो है